Assalamu alaikum, everyone. Thank you very much for joining us for this very exciting episode of ReCompute.tk. मेरा नाम वकार, मेरे साथ मेरे होस्ट जो हैं जुनैद और नमान, जिनको मैं एक दफ़ा इंट्रोड्यूस करना भूल भी गया था, सॉरी फॉर दैट। और आज बहुत ही स्पेशल किस्म की एपिसोड है बिकॉज हम लोग इस दफ़ा हमें ये फील हुआ कि हम एकेडमिक्स और प्रोफेशनल से तो बात कर रहे हैं और हमने आई थिंक दिस इज फॉर द 6th एपिसोड, और उसमें जाहिर बात है इवेंचुअली हमारा जो ऑडियंस है जिनके लिए हम काम करते हैं वो स्टूडेंट्स हैं, तो बहुत से इश्यूज उनकी तरफ से हमारे कोलीग्स ने भी रेज किया कि स्टूडेंट्स को ये इश्यूज भी आते हैं, ये मसले होते हैं। कुछ ने स्टूडेंट्स के इश्यूज भी बताए कि स्टूडेंट्स ये इश्यूज करते हैं, और कुछ ने उनको जो इश्यूज फेस होते हैं वो भी बताए। और ऑब्वियसली ऑल ऑफ दैट वाज वेरी वेरी यूजफुल, वेरी वैल्यूएबल इनपुट। लेकिन हमने ये सोचा कि हमें स्टूडेंट्स से डायरेक्ट भी बात करनी चाहिए और उनका पर्सपेक्टिव लेना चाहिए, बिकॉज ये सारी कहानी जो है वो ऑब्वियसली इट इज़ फॉर द स्टूडेंट्स। तो हमने आज वी गॉट 3 ब्रिलियंट पीपल हियर टुडे। So I would like them to introduce themselves. अपने बारे में बताएं, अपना नाम इंट्रोड्यूस करें और कहाँ पढ़ते हैं, ये पढ़ते थे, और what are you now, और maybe very briefly about your plans. और उसके बाद we'll open it up. So I'll just go around the way I have you on my screens, going counterclockwise. So सबसे पहले Farae, अगर आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें. Hi everyone, my name is Farae. I am an undergraduate student at GIK. And my major is computer engineering, and my main areas of interest include discrete and data structures, logic design, and programming. Before coming to GIK Institute for my undergraduate studies, I completed my American high school diploma from Saudi Arabia. And throughout my life, I've lived in various countries like Japan, Ireland, and the UK. Regarding my academic interests, since I was about 11 or 12 years old, I've quite enjoyed math, physics, and computer-related courses. And computer engineering sort of combines all of them under one degree. So that's why I picked it for my major. And once I graduate, I'm not sure exactly what I'll do, but I intend to pursue my master's, and hopefully if I can, inshallah, work in some company like maybe related to computer engineering, like Intel, Google, etc. One of them. Excellent. Thank you very much, Farae. Next, मेरे पास है Musawar. So I am a computer science student from Namal Institute. Currently, I have a developing interest in natural language processing and the ex-general secretary here at Namal, and I am the current president of Namal University and GIK. थोड़ा सा लैग आ रहा है आपकी आवाज में मुसव्वर. लास्ट बार रिपीट करें. यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ Namal LDS. I think we're literary and debating society. Okay. It's a student-run enterprise. Excellent. Aiman, अगर आप हमें introduce करें, please. Okay. Hello, thank you so much for having me in this podcast. My name is Aiman Hassan, and I graduated from Habib University in 2020. My major was in computer science and minor was in mathematics. I'm currently working as a front-end engineer in Stellic, which is basically a degree management tool company. And currently for higher studies, I want to pursue higher studies abroad as well, but I am in my comfort zone right now, so I'm liking this zone as well, and I want to explore more of the industry right now. Other than this, I was also a Google Women Tech Maker Scholar in 2019 and was also part of a Google Code U. Hello? Yeah. I was also part of Google Code U program in 2019 as well. That's pretty much about me. Wonderful. Thank you very much. So I'm very excited. हमारे पास बड़ा interesting, बड़ा diverse किस्म का panel है. हमारे agenda में मतलब it's not as such one point agenda नहीं है. Effectively very loosely जो मैं start में भी बात की थी कि हम चाह रहे हैं कि हम
आप लोगों से, स्टूडेंट से सुने कि आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं एक यूनिवर्सिटी से, एक क्लासरूम से, रियलिटी में आपको क्या मिलता है, क्या चीज़ें आपको लगता है क्लासरूम में और यूनिवर्सिटी में बेहतर हो सकती हैं. इट कैन बी वेरी स्पेसिफिक टू द क्लासरूम एंड आउटसाइड एज वेल. सो थोड़ा सा हम बात को स्ट्रक्चर करेंगे स्पेसिफिक सवालों से, लेकिन हम चाहते हैं कि आप समझें कि ये आपका मौका है to get your perspective to people like ourselves, or even people sitting above us, your administrators at universities के जो departments हैं, उनको एक क्या कहते हैं, informal और एक इस तरह के एक positive तरीके से एक feedback मिले from students across Pakistan like yourself. तो अगर मैं start करूँ, हमने कुछ बातें सोच रहे डिस्कस करेंगे आपसे. जब आप imagine करें, in fact रिकॉल करें जब आप यूनिवर्सिटी चूज करे थे अपने लिए अंडरग्रेड की, और अब आगे भी अगर चूज करते हैं या करने वाले हैं या करेंगे, व्हाट डू यू लुक फॉर इन अ यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट? क्या चीज आपके जहन में होती है जब आप, एंड मे बी आप उसके अंदर यू कैन ब्रिंग योर पेरेंट्स टू द पिक्चर एज वेल, बिकॉज ऑब्वियसली स्पेशली अंडरग्रेड के लेवल पे हमारे कल्चर में स्पेशली ज़्यादा क्वाइट कॉमन था, पेरेंट्स साथ बैठेंगे, अपने सिबलिंग के साथ बैठते हैं. तो व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? क्या आप लोगों की प्रायोरिटीज में होता है? अच्छा यूनिवर्सिटी में ये हो, कैंपस हो, टीचर्स हैं कि रैंकिंग के अंदर HEC में यूनिवर्सिटी कहाँ पे आ रही है, क्या चीज़ आपके जहन में होती है जब आपने चूज किया या आगे करेंगे? कैन स्टार्ट विद अगेन फारे, आप कुछ बारे में अगर करें. So when I was applying to universities 1 year ago, I considered quite a few factors, but the main ones included ranking. So I looked at HEC ranking, and I made sure that the university was recognized. And I also wanted to make sure that the university is accredited. So so once I graduate, the degree I have is internationally recognized anywhere, and it's equivalent to international standard. So for example, at GIK, all the engineering courses are accredited by Pakistan Engineering Council. So the education at GIK assures quality. So I like that and I picked it. And secondly, as I mentioned before, I really like computer engineering. Because my mother is a computer scientist and my father is an electrical engineer. So I've had an exposure to both of them. So I sort of picked computer engineering because it's a merge of both. And GIK specifically, it has a really unique computer engineering program compared to other universities, because its syllabus is really unique because compared to other Pakistani universities, because other universities, what they do, their computer engineering program is a mixture of computer science courses and electrical engineering courses. But at GIK, they have standalone computer engineering courses like microprocessor interfacing and VLSI design, like some courses that, so some courses which are offered at master's level in abroad, I can take them as electives at GIK in my future years. So I really like that about GIK. And the main reason why GIK has such a great academic, curriculum is because the faculty members, they get advice from international advisory boards. So they actually have contacts with international faculty members in all over the world, like University of Illinois in America and a bunch of universities in Europe. So because of that, the degree at GIK is extremely, it's up to standard. And also, of course, GIK is famous for its societies. It has over 20 of them. So I wanted to participate in them as well. So overall, GIK seemed to be the best choice for me. इसमें अगर मैं आपको सिर्फ ये अगर थोड़ा सा एक्सप्लोर करूं इन चीज़ों के अंदर से कि बिफोर ज्वाइनिंग इनमें से कौन सी चीज़ आपके रेडार में थी ज़्यादा प्रोमिनेंट? बिकॉज कुछ चीज़ों आप ज्वाइन करके डिस्कवर करते हैं, अच्छा ये चीज़ अच्छी है, और कुछ चीज़ें कभी कभी आपको अच्छी नहीं भी लगती, लेकिन क्या चीज़ें आपके रेडार पे बहुत प्रोमिनेंटली फीचर करी थी जो आपने जाने से पहले देखा और उसके बेस पे फैसला किया? क्या ये सारी चीज़ें थी या इनमें से कोई चीज़ थी जो ज़्यादा हाईलाइट थी? So when I was applying to universities, I created a list of universities that I was interested in. And obviously GIK was part of it, NUS was part of it, and LUMS and a bunch of others. And mainly
I looked at the, well, the main thing that I looked at was obviously the course curriculum, because I wanted to see whether they offered computer engineering, first of all, and quite a few of them didn't, but their computer science program was really strong. So I was happy to do computer science instead. But first of all, I shortlisted the universities that I really wanted to go to that had computer engineering. So basically engineering universities ended up coming at top. So universities like NUST and GIK, of course, and with 2-3 others like maybe UAT, etc. And then after that, I guess the stuff that I learned about GIK after I joined is that it's not isolated like I thought it would be, because obviously GIK is a really unique university, one of a kind in Pakistan, fully residential. So I was quite, I didn't know how life would be like at GIK. But when I went there, people, everyone is so friendly. And at GIK, nighttime is the time to have fun. You can go out and hang out with friends. There are concerts every weekend. So I think the student life aspect was really something I didn't expect from GIK, because it's in an isolated place. So I thought it would be really, boring and isolated, but it's actually really fun. It has been really fun. ठीक है, मैं थोड़ा सा परेशान हो गया था शुरू में, because इतना वेल इन्फॉर्म्ड स्टूडेंट स्टेपिंग इनटू द अंडरग्रेड, और उसको एक्रेडिटेशन का भी पता है और करिकुलम और रैंकिंग्स, तो वो फिर लेकिन थैंकफुली फारे ने बता दिया, तो उसके सिर्फ डीएनए में कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नहीं आ रहा वो तो इसलिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग सीम्स टू बी द नेचुरल चॉइस। तो लेकिन हाउ मच ऑफ दिस, यानी एक्रेडिटेशन कोई इंपॉर्टेंट चीज होती है, एचईसी की रैंकिंग कोई इंपॉर्टेंट चीज होती है, हाउ मच ऑफ दिस इंफॉर्मेशन फारे वाज कमिंग थ्रू योर पेरेंट्स, प्रैक्टिकली स्पीकिंग, और वाज इट यू ऑल अलोंग के तुम ही ये सारी चॉइसेस कर रहे हो, सारी यूनिवर्सिटीज देख रहे हो, और इवेंचुअली लास्ट जो फाइनल डिसीजन करना है वो भी तुमने ही किया? और साथ में स्पेशली करिकुलम की भी आपने बात की थी, तो करिकुलम शायद अंडरग्रेड से पहले स्टूडेंट्स को ये अंदाजा करना मुश्किल है क्वालिटी ऑफ करिकुलम का ना, तो उसमें कितना इनपुट आपके पेरेंट्स की तरफ से या बाकी कोई और एक्सपर्ट ओपिनियन था आपके पास? So my parents obviously they guided me about the universities that they recommended, because both of them graduated from Pakistan universities, so they had an idea. They graduated from UET, so they told me about like which universities they recommend and which they know provide good education and which are recognized internationally. So yes, they helped me shortlist approximately 7-8 universities out of many options. And then after that, I did my own research and I decided by myself, depending on the entry test requirements, etc. Right, wonderful. So I think with this, if we can get to Aiman, के क्या वो भी इतनी ही well informed थी, and क्या आप भी exactly यही चीजें देख रही थी हबीब यूनिवर्सिटी, इसी बेसिस पे शॉर्टलिस्ट की कि accreditation कैसी होगी उनकी and what not? Actually, that's like in my case, it's quite opposite. I did not come from a computer science background. Like I was an engineering student. So, and I loved maths and physics. So like all I knew was that I want to do something in engineering, right? And computer science was never an option. I never studied programming or anything else like that. So my goal university at that time was NUST, because of ranking like a typical student. I wanted to go to NUST. And then some of the things that mattered to me were faculty, campus life, and all of these things. I had my backup options with NED, Habib, and other universities. So luckily I got scholarship from Habib University, and we had some sessions at Habib like before the admission. When I went there, the campus life, interacting with faculty, that is something that convinced me that I want to come to this university. Like although it was very new at that time, but it gave me a lot of confidence. Okay, I can take a chance to be here.
Other than this, I think the best part of being at Habib University was that I could stay an undecided major for a year, and after that I can decide on a major. So yep. So like in the first year of our university, we all were studying kind of similar courses, which were a mix of arts, also computer courses. And I think from that and from there, I got interested in computer science. By the end of, I think by the start of second year of my university, I got internships and stuff. That is exactly when I got interested more in computer science, and I was confident that this is what I want to do. Other than this, I think what I loved about Habib was this interdisciplinary approach of Habib University, that you get to take courses other than your major or minor. For example, I was computer science major and mathematics minor. I also had the option to take courses from arts. So we had this course DIY, where there were students from both majors from arts and computer science. It was a mixture of arts and technology. And it was so much fun that we all went to Lahore for a project. And the idea was to make public spaces interactive through arts and technology. And I think that these kinds of experiences were so unique that I felt like Habib was the right choice for me, and it was the right decision. अच्छा नहीं hindsight पे अभी और I think liberal arts heavy at least उनके first few years हैं like the way you said. So before we get to that space, अभी जो इस वक्त हम तो start में we are just interested के किस basis पे Habib choose हुआ. The word seems कि scholarship was scholarship, the campus, and the then faculty की, लेकिन yes, वो faculty की आपने वो कुछ orientation sessions type कुछ थे. Yes. Just what you were admitted already, or was this before that? I wasn't admitted, but I had the option. Like I was in the process of scholarship. तो क्या यही case NUST के साथ भी अगर होता, since that was your initial first choice, right? तो अगर वो भी scholarship दे देते और वहाँ का भी faculty के साथ एक round हो जाता, hypothetically speaking. So basically I wanted to go to NUST Islamabad, and since I live in Karachi, so like the best option for me was Habib University, which is 15 minutes away from my home. So that was a better option. Makes sense. Thank you. Very interesting. अच्छा, मुसव्वर क्या है? तो आप नमल कैसे पहुंचे? I hope so. पहले तो मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी. थोड़ी सी रुक के आ रही है. आप भी ट्राई करें जरा. होप सो अब बेहतर होगी. ये बेटर. चलें थोड़ी देर के लिए वीडियो के बगैर ही गुजारा करते हैं. खैर, अच्छा, तो आप अगर अपना जर्नी बताएं, जो हमारे पास एक बिटवीन फारे एंड एमन के डिग्री एक्रेडिटेड हो, ऑफ कोर्स जो इंटरेस्ट है वो मिले आपको, वहाँ पे स्कॉलरशिप है, आपने विजिट किया, चीजें देखी. आपकी जब आपने नमल ज्वाइन किया, उसमें ये सब चीजें थी इन्वॉल्व, या वाज इट सम अदर कंसीडरेशंस जिसकी वजह से आप नमल पहुंचे? क्या देखा आपने और आपने चूज किया हाँ मैं नमल जाना चाहता हूँ? स्पेसिफिक वाली थी और किसी ने मुझे लिफ्ट नहीं करवाई. पाकिस्तान जितनी यूनिवर्सिटी मैंने अप्लाई किया था. और जो दूसरी चीज थी वो मेरे लिए सेटिस्फैक्ट्री थी, जो एलुमनाइज हैं कुछ नमल के, उनका रिव्यू अबाउट फैकल्टी और एनवायरनमेंट. तो ये जब दोनों चीजें हुई तो बस मैंने फिर नमल डन कर दिया. अब तो नमल जो है मेरे इनिशियल ऑप्शंस में से कहीं नहीं था. बट क्या जिकी या नस था तुम्हारी ऑप्शंस में, या इवन हबीब? नो सर, मुझे इनका भी नस्ट था, फास्ट था, कॉम सेट इस्लामाबाद था, प्यास भी था. तो इनमें से मेजॉरिटी में मेरा हो भी गया था. जब मैंने स्टार्ट किया था देखना, तो मैंने वही HEC की रैंकिंग का किसी ने मुझे बता दिया था. अब तो मेरा कोई वो गाइड वगैरह नहीं था, वो मैं खुद ही सारा कुछ कर रहा था मैनेज. तो वो HEC की रैंकिंग में से मैंने शॉर्ट लिस्ट कर ली कुछ यूनिवर्सिटीज़. तो
उसके बाद मैं उनका करिकुलम देखता और जो फीस स्ट्रक्चर होता कि मेरे लिए अफोर्डेबल भी है यूनिवर्सिटी या नहीं। तो देन फिर करते करते स्कॉलरशिप मुझे ऑफर हुई थी सिर्फ नवल से ही, तो मैंने बस, और जो रिव्यू था एलुमनाई का फिर वो भी काफ़ी अच्छा था, तो मैंने फिर नमल कर लिया। राइट। ये मैं तो यार थोड़ा सा परेशान हो रहा हूँ। तो मेरा वकार और नुमान से अब क्वेश्चन है कि क्या हम आप लोगों ने भी अंडरग्रेड के वक्त एचईसी या कोई रैंकिंग बॉडीज के क्या आउटपुट है वो चेक करके यूनिवर्सिटी अपने लिए अंडरग्रेड की पसंद की थी, या उस वक्त एचईसी तो होगा भी नहीं आपके ज़माने में? तो नहीं, एचईसी, हाँ एचईसी और रैंकिंग तो रेडार पे नहीं थी, रैंकिंग थी। जीआईके में गया हूँ मैं भी हारे की तरह, तो जीआईके जब मैं गया हूँ तो उस वक्त तो असल में उसकी वो अपनी रेपुटेशन के टॉप पर था। तो उस जीआईके के बारे में अगर आपको इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है जो मेरा था, जीआईके वाज एन ऑब्वियस थिंग टू ट्राई फॉर एटलीस्ट। हमारे पूरे मोहल्ले में एक बंदा था जो जीआईके गया था और वी वॉन्ट यही बंदा जीके का है, तो वो जीके का उस वक्त वो एक स्टेटस होता था। अभी ऑब्वियसली जीआईके कंसीडर वन ऑफ गुड यूनिवर्सिटी, लेकिन उस वक्त समझे आप लेट 90s में तो उसका बिल्कुल ही वो एशिया के टॉप 3 में आ चुकी थी वो, तो फॉर शॉर्ट वाइल। तो मेरे लिए इन अ वे इट वाज वन थिंग टू अप्लाई फॉर, बिकॉज व्हाई नॉट, यू नो, मेरा ख्याल नहीं होगा लेकिन चलो ट्राई करना चाहिए, टॉप यूनिवर्सिटी है। सो वो तो था, बट एचईसी राइट वाज नॉट ऑन द रैंक, नोवेयर ऑन द रेडार। पीसी का तो मुझे कुछ पता भी नहीं था क्या चीज होती है। नुमान तुम्हारे साथ भी ऐसे था? यार मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि उस वक्त एचईसी होता था या यूजीसी होता था, और मुझे तो उनके नाम भी नहीं मालूम थे ये क्या होता है। पर इनफैक्ट वालिदैन चाहते थे कि मैं मेडिकल डॉक्टर बनूं, खुद मैं फौज में जाने का शौकीन था, तो दोनों काम नहीं हुए। तो जो बैकअप ऑप्शन के लिए वालिद साहब ने अप्लाई करवा दिया था, वो ये चॉइस की थी कि मैं भावलपुर से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ एक ही यूनिवर्सिटी थी, तो इसी यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस एक नया अंडरग्रेड का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। तो सिर्फ ये सोच के कि ठीक है आने वाला टाइम ज़रा कंप्यूटर साइंस का टाइम लग रहा है, तो कंप्यूटर साइंस में अप्लाई कर देते हैं, और वो फिर इतफाक से फिर आगे कंप्यूटर साइंस में ही आ गए। लेकिन मुझे तो कुछ नहीं पता था, मेरे फरिश्तों को भी नहीं पता था ये एचईसी और इनकी रैंकिंग वाला क्या बनाया। यार मैं भी, इट सीम्स कि तुम लीस्ट इन्फॉर्म्ड ऑफ ये 6 लोग जितने मुझे स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। मैं तो नस्ट का नाम सुना हुआ था, और लाहौर में क्योंकि रहता था तो यूईटी का ऑफ कोर्स, इसी तरह क्योंकि खानदान में कुछ इंजीनियर हजरात, क्योंकि मैं प्री इंजीनियरिंग से था एफएससी, तो यूईटी का तो ऑफ कोर्स इट वाज गिवन चॉइस। लेकिन अब्बा जी एक दिन फास्ट लाहौर का वो ले आए कोई, आई डोंट नो क्या प्रोस्पेक्टस वगैरह, जब वो टाइम क्लोज आ रहा था। तो मुझे तो नाम से ही रिडिकुलस लगा कि फास्ट किसी यूनिवर्सिटी का नाम कौन रख सकता है। मतलब आई वाज सो क्लूलेस कि फास्ट लाहौर में एक यूनिवर्सिटी है। और बाद में ऑफ कोर्स आहिस्ता आहिस्ता फिर पता चलना शुरू हुआ कि मेरे जो दोस्त जा रहे हैं एफएससी के, वो काफी देर से ट्यूशंस पढ़ रहे हैं एडमिशन टेस्ट की तैयारियां करने के लिए फास्ट लाहौर में। और उस पर भी मुझे हैरानगी हुई कि लोग यानी इतनी प्लानिंग कर, इवेंचुअली उनमें से किसी का भी नहीं हुआ, और मेरा समहाउ फास्ट में हो गया जो, और मैं इसी तरह मुंह उठा के वहां पहुंच गया। बट नो मेजर प्लानिंग। कुछ चीजें मेरी रेजोनेट करती हैं जो मैंने यहाँ पे स्पेशली फारे और एमन जो बात कर रहे थे कि अपनी पसंद का कोर्स। तो मैंने याद है जीआईके का प्रोस्पेक्टस, अब पता नहीं होता कि नहीं वो प्रिंटेड प्रोस्पेक्टस, जीआईके वाज अहेड ऑफ इट्स टाइम। अब तो काफी कॉमन हो गया, बड़ा फैंसी प्रोस्पेक्टस प्रिंट, उस वक्त इतने नहीं होते थे। तो वो प्रोस्पेक्टस देख के ही मैं तो सॉर्ट ऑफ कुछ फिदा हो गया था। और फिर ये है कि कैंपस की उसमें तो फोटोज आ रही थी ऑब्वियसली, वो बड़ी इंप्रेसिव। और टू बी ऑनेस्ट यू नो जो लोग जा चुके हैं फारे ऑब्वियसली नो उसके वो कैंपस इट लिव्स अप टू द एक्सपेक्टेशंस, स्पेशली अगेन द गुड ओल्ड डेज। हर बंदा ही कहता है ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारे ज़माने में थोड़ा सा पोस्टर्स भी कम थे, खुला थोड़ा ज़्यादा था, बट अभी भी कैंपस है। तो ये चीज़ें मैटर की थी, कैंपस एंड वो। ऐसे में एक चीज़ अगर आप सबने कुछ ना कुछ हिंट किया, एक्चुअली दो ने तो किया है कि थोड़ा सा फैकल्टी को भी देखा या इंटरेक्शन हुआ या उनका प्रोफाइल देखा। सो बिफोर एडमिशन सर्टनली स्टिल इन दैट स्टेज क्या चीज़ देखी? मतलब आप फैकल्टी को देखा, आपने अगर ऑनलाइन देखा या मुलाकात लेट से हुई, व्हाट वर यू लुकिंग इन दैट प्रोफाइल जिससे बोला अच्छा दिस इज द फैकल्टी आई वांट टू स्टडी अंडर? आपने उनका देखा कि डिग्री कहाँ से की है उन्होंने पब्लिश किस तरह किया हुआ है, रिसर्च क्या करते हैं, मतलब व्हाट वाज द थिंग अच्छा ये अच्छी फैकल्टी है, व्हाट टोल्ड यू दैट?
anyone can just pick up the mic and start speaking. I can go first. Mhm. So for me, I think like I am also from like intermediate background, तो एक setup है कि बहुत खड़ूस teachers से वो होता है, like you know we face very खड़ूस teachers. So I think my interaction with the faculty was very nice. Like they were so polite, and also like their backgrounds were, they were all from international universities. So that is one thing that majorly struck to me. I think yes, the politeness, the kindness, like how friendly the faculty was. That is one of the major things like that gave me an impression that it's a good place to be at. Very interesting. लेकिन ये तो आपने physically when you went there because you could, Yeah. you're living 15 minutes away from the campus. लेकिन जिस तरह लाहौर का कोई स्टूडेंट है वो तो हबीब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट देख रहा होगा ना at Yeah. max, Yes. right? Or anywhere else in Pakistan for that Yeah. matter. तो उसको तो वो आप लोग क्या देख रहे होते हो, यानी उसमें पोलाइटनेस तो नहीं ना, वो तो आपको शक्ल नजर आएगी, शक्ल तो काफी लोगों की खड़ूस ही होती है. Yeah. Especially I think professors again की. for like the institutes, their experiences from the institutes they have been to, like especially ये पाकिस्तानियों को एक ये international experiences से बहुत ज़्यादा fascinate करता है, I guess. So that is I think one of the major things that we look at as well. As a student आप बात कर रहे हो कि Yes. this is something which appeals Yes. to you As guys. an intermediate student, I'm talking. Right, true. And thank you for being so candid and honest while reflecting. तो फारे क्योंकि डिटेल में देखता है हर चीज, तो उसका पर्सपेक्टिव मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूँ. So personally, I didn't really focus on the faculty too much. I just went to the GIKI website and I saw that they are internationally qualified at pretty much every instructor at GIK is internationally qualified. So that's pretty much the only information I had regarding the faculty. I didn't really look much into the actual professors, except the fact that the building itself, the faculty building itself is well equipped and the professors are internationally, they have gained international degrees. That's all I knew about them personally. I didn't do further research. But this, when I've come to GIK campus, obviously they've turned out to be extremely nice. And you can always get appointment from them. And if you're confused about anything and you have an exam coming up, you can always email them and they usually respond on the same day. And you can even get appointment, go to their office and have, like, usually what I do with my friend is not usually, but like sometimes when I'm especially stuck on a topic, I can send an email to the instructor and I can get an appointment and discuss a topic for maybe 30 minutes or even 1 hour. So it exceeded my expectations. नहीं, ये भी hindsight में है ना. तो अभी तो हम बात कर रहे हैं कि what did you look for, तो वो आपने clearly बता दिया. तो आप you were in Saudi Arab before you joined GIKI, is that true? आपने शुरू में कहा कि yes sir, I was there for around 2 years for my high school. Right, तो आपका जो FSC वाला around 3 years. Yes, around 2.5, 3 years. तो एमन की तरह वहाँ भी जो आपके टीचर्स थे हाई स्कूल के वो खड़ूस थे, क्या होता है कोई ग्लोबल चीज हो कि यूनिवर्सिटी वाले टीचर्स जो आके वो पोलाइट हो जाते हैं, उससे पहले खड़ूस होते हैं सारे. Was that a shared experience? It depended on the teachers because some of them are extremely nice, very friendly. So for example, my sport teacher, for example, whenever we wanted to play sport, we would just go to him, go to his office. Yeah, we want to play soccer. Yeah, and he would open the grounds for us, and we would play. So he was extremely friendly. But some teachers, they would make it clear that they don't want to be disturbed during certain hours. So there was, especially during teaching, I hope. Yeah, exactly. So yeah, so there was a variety in the school. Thank you. तो आई थिंक वो इस चीज को एक कंक्लूडिंग में ध्यान में पॉइंट्स आ रहे हैं इस क्वेश्चन से आगे बढ़ने के लिए कि अगर आप बोलें if you're talking to a university administration, which I hope you are, हमारे लिसनर्स में कोई ना कोई होंगे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स या whoever, आप उनको क्या बोलेंगे कि आपने उनको अगर बेस्ट स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करना है अपनी यूनिवर्सिटी में, तो व्हाट शुड दे फोकस, व्हाट शुड दे प्रायोरिटाइज? अच्छे स्टूडेंट्स हैं, आप खुद ऑब्वियसली
लेकिन अभी आपके आपके नेटवर्क में, आपके फ्रेंड्स में, यू मस्ट हैव एन सेंस ऑफ के क्या देख के उन्होंने यूनिवर्सिटी दी है, तो क्या एक यूनिवर्सिटी को, एक डिपार्टमेंट को करना चाहिए ताकि आप जैसे और ब्राइटेस्ट माइंड्स आर अट्रैक्टेड टू देम। अच्छा, आपने मुसव्वर को रूल आउट कर दिया कि उसके अब जब भी वो माइक खोलेगा तो आवाज नहीं आएगी कभी। चलिए ये मुसव्वर से स्टार्ट करते हैं फिर। हाँ, सर एक तो अभी स्कॉलरशिप, मैं अपना पर्सनली बैकग्राउंड बताऊं तो नंबर 1 स्कॉलरशिप, और दूसरा फैकल्टी, मतलब ऐसी फैकल्टी रखें सारी की सारी जो सबको टीचिंग आती हो कम अज कम, मतलब ये मैं तो यही 2 चीज़ें अपने, और ऑब्वियसली जिसको टीचिंग आती है उसको उसके जो सब्जेक्ट है उस पर कमांड भी है। तो मेरे लिए तो सिंपल है, स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप और आपकी जो वर्ल्ड क्लास फैकल्टी, ये 2 चीज़ें। इसमें ऑब्वियसली साथ में आप अब तीसरी चीज़ जो करिकुलम है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये 3 चीज़ें करना। आई थिंक मुसव्वर ने शुरू में भी बताया था ना कि जो बाय वर्ड ऑफ माउथ उसने नमल का रिव्यू जिसको वो कह रहा था, तो वो फैकल्टी के बारे में उसने सुना था, तो इट वाज रीअश्योरिंग फॉर हिम। लेकिन एक कॉमन कुछ ट्रेंड जो मुझे नजर आ रहा है, तो मेरे लिए वो भी क्वाइट टेलिंग है कि इस मतलब ये यूनिवर्सिटीज एम ही नहीं फलाना डॉक्टर फ्रॉम दिस, वो यानी ये लेबल साथ जरूर लगाते हैं कि उन्होंने पीएचडी फ्रॉम दिस, तो इट सीम्स कि वो इम्पोर्टेंट है। और आई थिंक एमन हैज बीन वेरी ऑनेस्ट इन आइडेंटिफाइंग कि ये कोई पाकिस्तानी शायद आई डोंट नो फिनोमेना है कि हमारे लिए वो अपील रखता है कि बाहर की डिग्री लेके कोई बैठा हुआ है। लेकिन मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि इन द हाइंडसाइट नाउ, जिस तरह मुसव्वर ने ऑलरेडी उस तरह बात कर दी है कि दूर जिस तरह होता है दूर के ढोल सुहाने, या मतलब कि वो डिग्री तो फॉरेन वाली है, लेकिन इन द हाइंडसाइट वुड इट बी स्टिल द सेम थिंग? अब आप देखोगे कि यानी टीचर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज, नाउ दैट यू हैव बीन थ्रू इट, राइट, अब आप एफएससी वाला स्टूडेंट नहीं हो, तो are these going to be the same set of things you're going to look for in a teacher, या आप किसकी बेसिस पे रिस्पेक्ट करते हो किस टीचर की ज्यादा? या आई डोंट नो, नुमान अगर इसको ज्यादा बेहतर तरीके से रिफ्रेश कर सकता है। नहीं, हाँ में ठीक है, क्लियर है ना इन लोगों को, अगर कुछ मसला है तो ठीक है, वरना गो अहेड। Okay, so for me, okay, the question has changed slightly from Musawwar ke baad. It has come to the teacher part. So I think nope, it would not like matter as much as it did to a FSC student ke international degree ho. It doesn't matter at all. In fact, what I believe matters is that the teacher has empathy for the student. There are a lot of teachers which treat and look at every student from the same perspective, but every student and every individual does not have same circumstances. So it's very important to have a teacher who can also become your mentor. I think that is one of the most important characteristics that I would look for in a teacher now. Other than that, I would definitely look for a teacher that has a good teaching style, a good friendly style, who is always welcoming, who can teach you rather than disrespect you or make you feel like you don't know anything. I think that is also very important. And the third thing is teachers who can stay connected with you even after you have graduated, and maybe exploring different things. For example, there are teachers that I'm still connected to that would force me to write papers, for example. You have to write this paper, you have to apply to this opportunity. So I think these are what makes a teacher a good teacher, rather than from which institute they have degrees from. और ये इज वन ऑफ दोस थिंग जो कि बाहर से देखना मुश्किल है, yes, अनलेस आपके पास हो मुसव्वर जैसा इनपुट हो कि आप ग्रेजुएट से आप बात करके कर सकते। तो इन सम वेज अगर आपके यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट से कुछ नेटवर्क क्रिएट हो सके जिसमें prospective students can talk to graduates of university. Yes, so मेरे that ख्याल is से true. Sorry to cut you off. That is true, but I think
it still applies to a very personal level. मतलब क्योंकि हर किसी का again experience different होता है. There are a lot of students who would say, oh, don't take this teacher's course, like, you know, he's like very strict or something, but that is not true in my case. I would like that teacher very much. So I think it's very much about your personal experience taking that course with the teacher and then thinking if you want to take the course, another course with that same teacher again or not. जी आई थिंक आगे ये ऑर्डर ही रखे हैं, एमन फिर फारे और फिर मुसव्वर. ठीक है. सो फारे आप कुछ ऐड करेंगे? सो व्हाट डू यू लुक फॉर इन अ टीचर? Yes, sir. So I completely agree with Aiman and Musawar about what they've said. And what I'd like to add is, obviously, I want my teacher and my instructor to, you know, be supportive of the student and, you know, be helpful if I'm confused about anything. And overall, I can ask for advice, and not just academic advice, but social advice. And this is especially important at a university like GIK, where, you know, you're living there full time. So obviously, if you have any sort of issues, such as, for example, if you're having trouble in a project, you can always request a teacher for some advice. And obviously, I'm a second year student, but I guess once I graduate, having some career advice from these instructors would also be quite nice. So all those things I agree with. And then another main thing that I look for in a teacher is when they are teaching, I prefer if the teacher starts explaining a new concept by emphasizing on the why first. Why is this topic important? Or why are we going to study what we are going to study? Some teachers usually what they do is they start with the definition and just overload the student with information. And this can, you know, cause the student to be confused and make it impossible for the student to follow. But especially at quite a few teachers at GIK, what they do is they first of all tell us why something is needed, or if there is a problem, they have a discussion. How can that be solved? And then from there, they gradually introduce the concept and they tell us the solution. So this sort of teaching technique makes it more interactive. So I like the teacher if I prefer if the teacher has a more interactive sort of teaching style. That can help a lot. ठीक, very interesting. मतलब ये एक I think overall ही ये टीचिंग की फिलॉसफी में ये ट्रांजिशन आ रहा है कि एक जो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है, बस आए और टीचर का काम है कि नॉलेज और कंटेंट कन्वे ट्रांसपोर्ट करके चले जाना है. यूएसबी स्टिक की तरह माइंड में आपने इन्फॉर्मेशन डाली और चली गई. एज अपोज टू दैट, जिस आपने जिक्र किया है, वो एक प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, जस्ट अ फैंसी वर्ड फॉर सेइंग कि आप प्रॉब्लम्स इंट्रोड्यूस करते हैं और उसके बाद फिर उनके सोल्यूशन में पहुंचते हैं. थ्रू दैट प्रोसेस आपको जो नॉलेज है वो भी कन्वे हो रही होती है. तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि आपको ये चीज़ क्या कहते हैं, आपने भी वो चीज़ नोट की जो कि आई थिंक एज अ होल दुनिया में उस तरह ट्रांजिशन हो रहा है ऑलरेडी. मगर इसी एस्पेक्ट को थोड़ा सा मजीद एक्सप्लोर करने के लिए ना, अगर मैं आप लोगों से इस तरह से पूछूं, आपने जो यूनिवर्सिटी में स्पेसिफिकली अगर आपने जो बेस्ट कोर्स पढ़ा, जो आपको जिसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हुआ या आपने एंजॉय किया, उन टीचर में कौन से वो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स थे जिन्होंने उस कोर्स को बेस्ट बना दिया ना, या आपने कोर्स कोई अच्छा नहीं पढ़ा जो आपके ख्याल में आपका बहुत खराब गया कोर्स, उसमें टीचर का क्या रोल था कि वो कोर्स खराब हो गया? Right. So the teacher that I had an amazing teacher in my first and second semester, initially for introduction to computer programming, and then in second semester for object-oriented programming. I had the instructor and he was amazing because what he did, he actually brought his computer to the class and he connected it to the projector. And instead of teaching from lecture slides or from a textbook, he actually opened an IDE and he started coding. And what he would do is he would obviously do what I just described. He would first of all tell us what is the purpose of this new topic that we are going to study. It can be anything like while loops or constructors or in C++, anything. He would first of all tell us the purpose. What needs to be done?
and then just start describing the actual thing that is required to do this. So, and because he is coding right in front of us in real time, we can always stop him and ask him, sir, what is the purpose of this line of code? Sir, why is it written like this? And he can actually modify the code to on the spot. Show it to us. And yeah, so this was really amazing. And he also focused on applications of what we learned. So at the end of second semester of object-oriented programming, we were given a project, a group project, where we programmed a game, sort of like an 80s or 70s game, arcade game. So so not too complicated 3D game, just a 2D game where, you know, it can be Pac-Man, it can be Space Invaders, it can be anything. And obviously, many students in our class love gaming. So they loved it when C++ sort of linked with the game. So everyone was really enthusiastic. Even the people who didn't have much programming background, they also loved it. So I think the teachers' decisions in how to teach the course were great. अच्छा, ये सवाल आई थिंक एक और एस्पेक्ट से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सम यूनिवर्सिटीज एटलीस्ट या उसमें कुछ लोग एट एडमिनिस्ट्रेटिव सिचुएशन मतलब डेजिग्नेशंस, दे लाइक टू थिंक कि एक कोर्स कोई भी पढ़ा सकता है, यानी कि अगर उस कोर्स की फाइल जबरदस्त तैयार हुई हो ना, विच तो कोर्स का कंटेंट इज वन थिंग ऑफ कोर्स, जैसे आपने प्रोग्रामिंग के कोर्स की बात की है, तो फारे से ही स्टार्ट करते हैं, देन फिर एमन और मुसव्वर पे जाते हैं। डू यू थिंक कि आपने कोई ऐसा कोर्स पढ़ा है जो कोई और टीचर उस कोर्स, जो आपका ऑफ कोर्स बेस्ट कोर्स है, फेवरेट कोर्स है, लेकिन कोई और टीचर उसको साथ सेम ट्रीटमेंट या जस्टिस नहीं कर सकता? इट वाज समथिंग अबाउट दैट कोर्स आउटसाइड द कंटेंट, जो उस टीचर की बीइंग का पार्ट, मतलब उसकी पर्सन का पार्ट था, जो उसने किसी तरीके से ट्रांसलेट किया इनटू द कोर्स, और वो रिप्लेस नहीं किया जा सकता। मतलब कोई और कराएगा तो कोई और एस्पेक्ट ऑफ कोर्स सामने आ सकता है पॉजिटिव, लेकिन डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट कि क्या कंटेंट के आउटसाइड कोई चीज होती है जो व्हिच मेक्स द कोर्स व्हाट इट इज? Absolutely. So two courses came into my mind immediately, especially so the first one is programming, as I described, and it shows that the instructor, he did really well, because students who were really, you know, they had a stigma from towards programming, they were really afraid of it, and but they started enjoying the course, and they started studying the course for fun. They were not studying the course for exams. They were enjoying, and they were happy and jumping up from their chairs when they were writing programs and it was working. So obviously the programming instructor did extremely well. And then the other course that I would like to mention would be discrete structures, because discrete structures is a really unique course. You've got, you know, in one chapter you have algorithms, and then in another chapter you have a completely different topic like counting and combinatorics. So it's quite a distinct course compared to others. And the instructor for that course, he also studied from GIK, and he was extremely knowledgeable. And he said it was his favorite course when he took the discrete structures at GIK. So obviously he was very passionate about the course. So it was very visible that he liked teaching the course to us. So it was not as if he was bored when he was teaching. He was happy teaching it, and he was really enthusiastic. So that made us really enthusiastic. And he also gave interactive problems during the class. So, you know, we got into groups, we tried to solve it. So it was a great experience taking that course. So computer programming and discrete structures, these two courses were great. वंडरफुल वंडरफुल। यानी कि जिसका अपना पर्सनल इंटरेस्ट कोर्स में ना हो, अगर टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो उस तरह से एंथुसियाज्म के अंदर ट्रांसलेट ना हो पाता, यानी कि द काइंड ऑफ एंथुसियाज्म के जो स्टूडेंट्स तकसीब कर जाए। मेक्स टोटल सेंस, थैंक यू। एमन, आपके साथ भी कोई ऐसा हुआ? Yep, totally. I completely agree with whatever Farae said, that the most important part about teaching a course is that
the teacher himself or herself is also enjoying teaching the course, like, knowing it enough to be able to teach it in a fun way. So what the course that comes to my mind is object-oriented programming. And I'm sure I've been taught that course by Dr. Umair, and that is one of my favorite courses. A lot of people hate that course, but that was such an amazing course. Like, I got to understand so much basics of computer science through that course. And majorly because the idea was neither the completion of the course nor the completion of that semester, but making sure that you understand the course. I think the approach that the professor would have is to engage each and every student in the class, because usually ये होता है कि जो बच्चे अच्छा पढ़ रहे होते हैं, बस the teacher would only point to them, would only interact with them, and that would make the course boring for the other students that are not getting engaged. So I think the best approach is to engage the whole class all together and then teaching the course. Also, और इसको आप expand कर सकती हैं कि the dynamics of the classroom, जो आप you felt engaged in the course. Yes. How was it different from, for example, somebody coming and talking over slides? What was different from that situation कि आपको feel हुआ कि हर कोई engage हो रहा है उस course में? So basically, I think what I would feel is कि अगर मतलब like a teacher is pointing towards me, asking me questions, explaining or answering my questions, what I would feel is motivated. I am being important enough in this class for this teacher that he is giving me attention and asking me questions or answering my queries. While on the other hand, if the teacher is not interested at all in answering my questions, just ignoring my existence, I would feel automatically demotivated and eventually end up using phone in his class all the time. So that is one thing. ये बड़ी छोटी सी चीज है कि आप अपनी body language से और the occasional eye contact से you can do this. और I suppose मतलब मैं किसी और को क्या point करूँ, मैं अपने आप को ही देखता हूँ, तो I think I just maybe overlook this just because आपका mind उसकी तरफ focus नहीं होता है. It is a very small thing to do, but it's, to be honest, it's very surprising for me कितना बड़ा impact ये चीज का हुआ आपके classroom experience के ऊपर. And I think it's such a natural thing that you want to perform well in that course. Matlab, you feel like that this teacher is giving me attention, I have to give up and give in enough efforts to ace this course and not let down this teacher. So I guess empathy works both ways. Students have to be empathetic too. और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको फिर उसी तरीके से निभानी होगी. आई विश के सारे लोग अपनी जिम्मेदारी इस तरह पूरी करते हैं. Yet there's something interesting you said. फारे के एक्सप्लेनेशन से लग रहा था कि वो तो everyone is jumping on their seats, वो इतना एक्साइट कर दिया. But you said it seems कि, तो correct me if I'm wrong, कि वो टीचर जो आपको बहुत अच्छा लग रहे थे because of what you just said, वो reasons, लेकिन it wasn't working for everybody. सारे students weren't equally happy with the instructor. I thought you said something of that order. Is that true? So obviously what you guys just talked about, empathy works both ways. So like, for example, there were some students who had a lot of difficulty doing programming, but they were able to excel thanks to the instructor. And also the main thing that the instructor emphasized is that he is going to teach us and he is going to motivate us. And then the hard work the student has to do. So the student has to do quite a lot of the hard work, learning and, doing the assignments. And if you're really confused, actually going to the instructor, discussing it with him, students need to have enough motivation to do that. So obviously not all students, some students still found difficulty in programming, and that's of course happens in all courses. It's impossible to have a class where everyone is 100% spot on. So obviously there were some students who were still overwhelmed, and also COVID-19 pandemic played a part in that, because online and then not being able to speak with the instructor face to face and online lectures. So that played a role in not being able to
participate in class as much. So maybe that was also COVID. I think COVID के हम separate treatment करते हैं कि what worked, what didn't work COVID. But I think COVID से outside इस वक्त बात करते हैं. मैं तो एमन से पूछना चाह रहा था कि फारे के तो statements ऐसे लग रहा था कि across the board uniformly सारे students excite हो रहे हैं. लेकिन एमन की बात से लगा कि what worked for her didn't work for everybody in the class. Yeah, am I mistaken, Aiman? No, I think that's correct. तो वो ऐसा क्यों था कि because what you said made total sense कि एक टीचर है जो हर एक को इम्पोर्टेंस दे रहा है. इक्वालिटी एक तरह से है ना, वो सिर्फ जो थीटे हैं क्लास में सिर्फ उन्हीं की तरफ मुंह करके नहीं पढ़ाई जा रहा. एंड येट यू सेड कि सारों को वो टीचर इतना इक्वली अच्छा नहीं लग रहा. Why is that? Okay, so like what comes to my mind is like when I was in my first semester, as I mentioned initially, I did not have a computer science background, right? So it was my first semester and I remembered this teacher who was everyone's favorite and I was very excited to take his class as well. But it was my first introduction to computer science course and I had high expectations to learn. Like I didn't even know what programming is. So I would definitely looking forward to learning in the class. But what ended up happening was that he would be showing us some computer science related movies and he would assume that everybody knows programming in the class, let's say. And everybody was quite happy there. Oh, and honestly, 80% of the people did know programming. They did not have struggle with basics of programming. But on the other hand, I was totally struggling in that course and I didn't even know what, I wanted to learn in that class and we used to have fun in that class, which was not working for me, but it was working for 80% of the population. So although the teacher was too kind, too friendly, and was always there to help in his office hours and stuff, but still that was not enough for me because I had different expectations from the classroom as well. Wow, very, very interesting. तो मुसव्वर से भी कोई ये सवाल पूछ ले, मैं नहीं पूछ सकता. अच्छा, हाँ मुसव्वर, तो आप बताएं कि आप एक अच्छे टीचर के आपके जहन में अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं अच्छे कोर्सेज के, तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके ख्याल से जिसकी वजह से आपके लिए वो कोर्स अच्छा हुआ? और जिन्हें के बाद कोई मैं अगर वो रिफ्रेश कर दूं कि क्या आपके ख्याल से कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं टीचर में जो कि जिसकी वजह से वो कोर्स यूनिक बन जाते हैं और वैसा होता है जैसा वो है और वो ट्रांसलेट नहीं हो सकता किसी और बंदे के ऊपर? कुछ काफ़ी सारी चीज़ें तो एमन वगैरह ने ऑलरेडी कवर कर दी हैं और मैं उनसे कम्प्लीटली एग्री करता हूँ. जो एक एस्पेक्ट था एंगेजमेंट वाला, मतलब आपकी जो कम्युनिकेशन है वो 2 वे हो रही है, क्लास भी इन्वॉल्व है आपके साथ, मतलब आपको पता है वो आपके साथ सीख रहे हैं या नहीं. अब अक्सर जो मेरे कोर्स खास तौर पे बुरे गए हैं उनमें यही होता था कि टीचर को पता ही नहीं होता कि मतलब क्लास बैठी हुई है या नहीं बैठी हुई, उसके लिए वो चीज़ मैटर ही नहीं करती. होप सो सर ऐसे भी हुआ है. तो वो अब जो अच्छे वाले हैं उसमें अब एक जो उन्होंने पॉइंट मेंशन किया था वो मैं भूल गया, खैर आई थिंक वो मोटिवेटर का था और एक सिमिलर वर्ड उन्होंने यूज किया था. वो ही टीचर मेरी नज़र में भी जो बेस्ट गए हैं मेरे कोर्सेज उसमें ये था कि वो आपको एक्साइट कर देता है उस सब्जेक्ट के बारे में, वो खुद भी लग रहा होता है कि टीचर को भी पढ़ाने में मज़ा आ रहा है, नंबर 1, और फिर वो स्टूडेंट्स को भी उस डायरेक्शन में एक्साइट कर देता है कि स्टूडेंट्स खुद भी फिर वो पढ़ना भी चाहते हैं. तो ये अब वो काफ़ी ये कम है. कुछ टीचर्स में ये चीज़ तो होती है कि उन्हें सब्जेक्ट पे कमांड भी होती है और वो पढ़ा भी अच्छा रहे होते हैं, लेकिन जो फिर ग्रेड्स होते हैं वो फिर जो बहुत ही अच्छे टीचर्स होते हैं वो उनमें ये एक्स्ट्रा साथ में एक चीज़ होती है कि वो स्टूडेंट्स को भी एक तरह से एक्साइट कर देते हैं वो पढ़ने के लिए भी, और स्टूडेंट्स को भी मज़ा आ रहा होता है वो चीज़ पढ़ने में भी. और मेरे भी जो नमल में भी एक्सपीरियंस रहा है, मेजॉरिटी बहुत अच्छे टीचर्स थे, चंद एक ग्रेड थे उनमें, 2 मेरे साथ बैठे हुए हैं फिलहाल. मैं क्या था, मैं इसलिए नहीं पूछना चाहता सवाल. अभी जरा ना हम
जरा दूसरी तरफ भी आते हैं ना फिर, ताकि स्टोरी नहीं, आई हैव नो डाउट। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आप लोग की सबकी बातों से चीज़ मुझे फील हुई है, बिकॉज ये मैं खुद भी अपनी प्रैक्टिस के बारे में सोचता हूँ कि मैं अपनी कितनी एंथुसियाज्म क्लास में लेकर आऊँ। तो कभी कभी लगता है कि यार ये इफ आई एम एक्साइटेड अबाउट इट, स्टूडेंट को से क्या लाइक ऑलमोस्ट फील लाइक आई एम काइंड ऑफ पुशिंग पीपल टुवर्ड्स माय एंथुसियाज्म। लेकिन ये आप लोगों की बातों से फील हो रहा है कि नहीं, मेरे ख्याल से इट्स गुड टू डू दैट, वी शुड बी मोर just more humans in the classroom. If I'm enthusiastic about it, then I should show it. So for me, that's a very interesting actually observation. बकर एक चीज मैं इसमें इसी क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में ना, कि वर्कलोड कितना मैटर करता है कि आपको एक जो ग्रेट टीचर है वो ग्रेट से कम होकर गुड लगने लग जाए अगर वो आपको वर्कलोड ज्यादा देता है। तो वर्कलोड आपके ख्याल में कितना मैटर करता है, या एक अच्छा टीचर आपको बुरा लगना शुरू हो जाए? तो ये थोड़ा सा जरा क्लियर कर दें। Yeah, he go first again. I think so. For me, workload is very subjective for every student, because अगर किसी को आता है सब कुछ, like एक assignment है, it might not feel like बहुत बड़ा assignment for that person, but somebody who is struggling in that class, somebody who doesn't know properly how to do it, it would be like a week-long assignment for him, while on the other hand it would be a one-day assignment for the other person. So I think एक तो चीज ये है, like the subjectivity here. The other thing is कि definitely like you have to give enough workload that is doable. अब बिल्कुल undoable होगा तो फिर you will see the results yourself, that every student will eventually start feeling your course. I think that's one thing. और आई थिंक इससे पिछले क्वेश्चन में एमन ने उसकी तरफ पॉइंट आउट भी किया कि वो जो फन, कुछ लोग एजुटेनमेंट की तरफ चले जाते हैं, तो वो भी सारे स्टूडेंट्स के लिए डजंट वर्क, कि टीचर का काम एंटरटेनमेंट करना नहीं है। यानी कि जो एंथुसियाज्म को ट्रांसलेट करना है, वो एकेडमिकली ग्रेट टीचर्स उसमें सक्सीड करते हैं विदाउट टेकिंग इट इनटू एंटरटेनमेंट वाली साइड से। वो मूवीज दिखा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बट कैन वी गो टू फारे, अगर इस सेंस में कुछ कहना चाहता है? So at GIK, the workload is a lot because obviously it's an engineering university, and I remember because of the COVID-19, they were, for example, I remember at one time in the second semester, we had a day where all the courses, where quizzes for all the courses were going to be taken together. So I was going to be in the exam hall for around 5-6 hours continuously. So this sort of workload is, I think, too much. I think, so at times, I think there should be a moderate level of workload. And obviously that's a bit, and at GIK, I think workload is one issue where many of my friends would also, go on for many hours, that it's too much because obviously quite a lot of those projects are quite lengthy, and usually you need to dedicate at least some amount of time. But obviously that's really hard to do when you have a quiz tomorrow, and then the day after tomorrow you have another quiz, and then day after tomorrow you have a presentation in front of the class. So when it's like that, it can be tough. But so at GIK, it's not workload overload all the time, but usually near the final exams and the midterms, it's really overloaded. So that's an issue at GIK, I think, that needs to be addressed. I wanted to add one more point. From the student's perspective, I think about workload, if you do have the option to select your courses each semester, then you should set up a schedule which some courses are 4 credit courses, some are 3 credit courses. So eventually आपको पता होता है कि अच्छा इसका workload ज़्यादा ही होना है. So you should be able to come up with a schedule which is like a mixture of light courses and 4 level courses to give you enough time and space to learn along with acing those courses as well. ये इंटरेस्टिंग डिस्कशन है बिकॉज इसमें थोड़ा सा जरा अमेरिकन वर्सेस
ब्रिटिश सिस्टम का भी कुछ रोल आ जाता है, पाकिस्तान सेमेस्टर सिस्टम फॉलो करते हैं, यहाँ थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा इंटेंसिव है। और मेरा एक्सपीरियंस यूके का है कि यहाँ पे थोड़ा से किड ग्लव्स पहन के काम करते हैं, दैट सीम्स टू बी वर्किंग एज वेल। सो ये मेरे ख्याल से एक कॉम्प्लेक्स बड़ी चीज़ है कि व्हाट इज द राइट बैलेंस देयर। सर आप कुछ चीज़ ऐड करना चाह रहे थे इसमें वर्कलोड वाले क्वेश्चन के ऊपर? यस सर, उसमें एक ये चीज़ होती है कि अब हमें अक्सर ये लग रहा होता है कि टीचर्स का आपस में कम्युनिकेशन नहीं है। मतलब एक टीचर ने कोई प्रोजेक्ट असाइनमेंट दी हुई है तो दूसरे को पे पता हो तो वो शायद थोड़ा सा हाथ हल्का रख लें, उन्होंने भी अपनी मर्जी की दे देनी है और इसी तरह, तो उससे कभी कभार थोड़ा ओवरलोड हो जाता है। और जब फिर ओवरलोड होता है तो स्टूडेंट्स फिर शॉर्टकट मार रहे होते हैं और किसी तरह जान छुड़ाते हैं उस चीज़ से, वो लर्निंग वाला एस्पेक्ट वो काफ़ी कम हो जाता है फिर। तो ये चीज़ थी कि मैं तो नहीं समझता कि यस सर। नहीं, वेरी इंटरेस्टिंग। मैं ये कहता हूँ यहाँ पे मैंने कुछ जगह ऑब्जर्व किया कि एक ईयर हेड होता है, लाइक अ पर्सन फ्रॉम द फैकल्टी जो कि अक्रॉस द ईयर देख रहा होता है। उसका काम वही होता है जो एग्जैक्टली आप कह रहे हैं कि कोर्सेज के दरमियान सिंक्रोनाइज करना चीज़ों को। अगर लग रहा हो कि एक कोर्स का लोड बहुत ज़्यादा किसी एक टाइम पे जमा हो रहा है तो लोगों से बात करके थोड़ा सा ज़रा वहाँ पे हल्का हाथ रखो, उनको प्रोजेक्ट जमा कराना है। somebody like that looks like from your input as well कि इस तरह के रोल्स जो हैं they have a utility. तो अच्छा मुझे पता है, I know we've been going about this discussion, लेकिन मैं अगर एक मुझे लग रहा है in some ways this is the main input that we wanted to get from you. So मेरे ख्याल से few more minutes on this topic would be okay, because जो मैं पूछना ही चाह रहा था आप लोगों से कि मैं अपने एक्सपीरियंस से, एक लाइफ एक्सपीरियंस से मैं जो बहुत से नतीजों पे पहुंचा हूँ जो फिर बदलते रहते हैं, उनमें से एक ये है कि अक्सर ये डिटरमिन करना कि क्या करना चाहिए है, व्हाट इज द बेस्ट वे, वो बहुत मुश्किल है बिकॉज उसकी बहुत सी शक्लें हो सकती हैं। लेकिन इट्स काइंड ऑफ ईजियर टू पॉइंट आउट कि क्या नहीं करना चाहिए, या कम से कम ये ना करो, जो भी करो अच्छी डाइट में, अच्छा बहुत से ऑप्शन अच्छी डाइट के, लेकिन सुबह दोपहर रात डोनट खाना अच्छी डाइट नहीं हो सकती, फॉर नोटिस टू माई सेल्फ। तो अगर मैं इस तरह पूछूं आप लोगों से कि आपके नज़दीक एक टीचर को कम से कम ये नहीं करना चाहिए, अच्छे टीचर्स की बहुत सी शक्लें हो सकती हैं, लेकिन ये चीज़ जो है आपकी मोटिवेशन को, आपकी इंगेजमेंट को, आपके एक्सपीरियंस को बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट किया, तो ये चीज़ें आप अगर टीचर कम्युनिटी से रिक्वेस्ट करें कि प्लीज़ आप ये अपने स्टूडेंट के साथ ना किया करें, इस तरह की चीज़ आपके जहन में कोई बात आती है तो आप शेयर करेंगे प्लीज़। I think comparing between two students, it's like a big no. Like teachers should not do it. Everybody is like coming from a different background and have different problems. I think it's very important for teachers to understand every student on a very personal level, and that is something they should never do, because that is one of the very like big demotivating factors for students. Comparison between two, because you would end up like, ऐसे सही है आप उसी को कर लें, फिर I would just say no. Well put. Very interesting. ये one of those things जो कि अगर siblings में भी हो तो आपको बहुत तकलीफ दे लगता है कि अगर माँ बाप बच्चों के कंपैरिजन करें, because obviously at some level eventually unfair हो जाता है वो। और I completely see what you're saying कि, और ये again थोड़ा सा यहाँ पे प्राइवेसी इश्यूज थोड़े से डिफरेंट है। यहाँ पे तो स्टूडेंट्स को किसी और ग्रेड भी पता नहीं चलते, खुद बताएं तो बताएं, लेकिन वो जो अब मैं सोचता हूँ कि अब मेरे लिए बड़ी एलियन सी वो चीज़ हो गई है कि पूरी क्लास का रिजल्ट सामने दिखा नजर आ रहा हो ना, तो A to Z कौन जा रहा है, और पूरा नोटिस हुआ होता है पब्लिक नोटिस बोर्ड्स के ऊपर। यहाँ पे तो हमें बंद कर देंगे अगर हम ये काम किया तो, प्राइवेसी के लॉज इतने स्ट्रिक्ट हैं। बट वो तो एक इनडायरेक्ट है, वो पाकिस्तान में आई नो ये होता है और स्टूडेंट टीचर जानबूझ के नहीं कहते, वो सिस्टम पाकिस्तान के फिलहाल ऐसा ही है। लेकिन एटलीस्ट व्हाट आई गेट फ्रॉम यू के डिलिबरेटली क्लास में नाम लेके या यू पॉइंट के लोगों को उस ना करें। एंड ऑल्सो ये भी नहीं है कि मतलब आप बिल्कुल इस चीज को एक्नॉलेज ही नहीं करें अगर कोई बुरा परफॉर्म कर रहा है। लाइक यू नो, हैव अ कन्वर्सेशन विद दैट स्टूडेंट, call them in your office, ask them what their problems are, why are they not performing well. Like, you know, you will get some insight on what's happening in students' lives. Kind of surprising कितनी चीजें पेरेंटिंग स्किल्स के साथ ओवरलैप करती हैं जो आप बात कर रही हैं। But anyway. अच्छा, और फारे आपका कोई इनपुट है in this context? Overall, I agree with Aiman that teachers shouldn't compare between students. In fact, coming back again to the programming instructor, I remember he never discriminated between like he didn't discriminate between students.
he, like, for example, there was this boy in our class who was quite, he did not have a programming background, so he needed obviously more, and the instructor knew that. So what he would usually do is encourage him during class and outside of class as well. So I think my point is exactly that of Aiman, that they shouldn't discriminate between students, and instead of giving favors, like giving them more opportunities, or you should give them the equal opportunity to shine in the classroom. So that's my judgmental नहीं होना चाहिए. Would that be a fair way of putting it? आपका काम मार्क करना और बात है, बैठ के जजमेंट पास ना करें स्टूडेंट्स के ऊपर. और जिन्हें आपको मैं कट ऑफ कर दिया, कुछ कह रहे थे. नहीं मैं ये डिस्क्रिमिनेशन का आई थिंक इस फोरम पे भी और कुछ और मेरे पर्सनली भी स्टूडेंट्स आके अक्सर ये वर्ड यूज करते हैं. एंड द फैक्ट दैट यू गाइस हैव यूज्ड दिस टर्म, इट मींस कि कुछ टीचर्स हैं जो कर रहे हैं ना डिस्क्रिमिनेशन, एंड इट इज प्रिसाइसली बिकॉज ऑफ दैट जो टीचर नहीं कर रहा होता, दैट टीचर स्टैंड्स आउट, राइट, आप लोगों के केस में. तो बट कैन यू इलैबोरेट ऑन दिस कि वो उसका मतलब क्या है डिस्क्रिमिनेट? कोई टीचर कैसे करता है, फॉर इंस्टेंस विदाउट नेमिंग एनी टीचर, आप यानी टीचर क्लास में डिस्क्रिमिनेशन कैसे कर सकता है? Right, so I don't know, I mean, it has only been 1 year since I've come to GIK, and and also I've spent most of my time online. So I've not really had much issues with the instructors. Like, I can only think of good instances with the exceptional instructors. I would say that overall, some instructors, what they might do is so if two students have some query or some issue, it can be any issue, like they have some issue with assignment or homework or anything. What I've noticed is usually they reply to students that they prefer, and leave the other student out in the email. Like, maybe I've noticed these small instances where one student gets favor over the other. So, right, but I haven't always, तो preferential treatment किसी भी तरीके से तो student exactly समझ आ जाती है. Right. Musawar, if it can come to you. Thank you, Farae. Yes, sir. Sir, before इस पे मैं कोई comment करूँ, मैं एक तो चीजें तो clear करना चाहूँगा. वो ये है कि जो मेरी majority of teachers जो अभी भी नमल में हैं वो जबरदस्त हैं, और मैं मतलब इससे बेहतर जगह आई डोंट थिंक मैं हो सकता था नमल में. खासतौर पे अभी मेरे कोई, अब मैं यहाँ पे कुछ 35 के करीब कोर्सेज पढ़ चुका हूँगा, जिसमें तकरीबन 10 लैब्स कर लें 1 क्रेडिट की और 25. और जो प्रॉब्लम्स जो फेस हुई वो अभी जो 25 3 क्रेडिट और के कोर्सेज हैं वो बेसिकली आपको एक नॉर्मली प्रोफेसर लेवल का बंदा पढ़ा रहा होता है. तो उसमें मैं कहूँगा 15 to 17 ज़बरदस्त थे. तो बाकी जो रह जाते हैं उसमें कुछ चीज़ें मैंने नोट की, और उसके कॉन्टेक्स्ट में और नमल के कॉन्टेक्स्ट में मैं इस चीज़ को एड्रेस कर रहा हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो जो फारे और एमन ने कहा डिस्क्रिमिनेशन वाला, ऑब्वियसली वो एलिमेंट नहीं होना चाहिए. दूसरी चीज़ मतलब मेरी पहली कर लें, वो ये है कि ब्लैकमेल एटलीस्ट टीचर को नहीं करना चाहिए अटेंडेंस पे और ग्रेडिंग पे. कि मैं ऐसा स्टूडेंट हूँ कि मेरी पर्सनली देखें तो 95 to 100% मेरी अटेंडेंस होती है, लेकिन इसके बावजूद भी एक तो मैं कंपल्सरी अटेंडेंस के स्ट्रिक्टली अगेंस्ट हूँ. दूसरा फिर वही है, कंपल्सरी हो तो फिर टीचर कुछ थोड़ा सा ब्लैकमेलिंग वाला एलिमेंट भी आ जाता है उसमें. तो अब एक ये चीज है कि ब्लैकमेलिंग से मुराद आपकी सॉरी थ्रेटन करना इन सम वे के अगर आप ना आए तो मैं आपकी अटेंडेंस काट लूंगा, या मतलब इस टाइप की कोई चीज. यस सर, उसमें फिर आपकी तो स्कॉलरशिप भी कपल हुई हुई होती है. एटलीस्ट ऑन पेपर्स तो है कि अप्लाई नहीं होती है पॉलिसी कि आपने कम से कम इतनी % रखनी है. वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली उस चीज़ को वो कर रहे होते हैं कभी कभार. और जो दूसरी मैंने बात की आई थिंक ग्रेडिंग की, तो वो अब कुछ टीचर्स को ग्रेडिंग करनी नहीं आती है, मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है. वो टीचर्स को सीखने चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर एक बंदे ने एफर्ट की है उस कोर्स में तो उसे अच्छा ग्रेड मिलना चाहिए. अब मैं आपको अपने एक फ्रेंड का बताता हूँ. अब एक लैब में थे, उसके
तकरीबन को 95 मार्क्स थे। उससे ऊपर एक लड़का था, उसके 97 थे। अब जो 97 वाला है उसको लैब में ए मिला हुआ है और वो उसका ए नेगेटिव है, और उसने सिर्फ उसी लैब में उस सेमेस्टर में उसका ए नेगेटिव था, जिसकी वजह से उसका वो जो 4 GPA है उससे वो गिरा। ये काफ़ी सरप्राइजिंग सी चीज़ है। इसी तरह आप देख लें बाकी कोर्सेज में भी ये होता है। अक्सर में इस तरह लग रहा होता है कि भाई टीचर ने वो ये किया हुआ है कि उसने एक ही ए देना है पूरी क्लास में। अभी तक मुझे रिलेटिव तो ग्रेडिंग मतलब 97 वाले को ए और 95 वाले को ए माइनस, राइट? ये कह रहे हो? ये तो चलें उसका हो, यस सर, ये तो उसका हो गया उस कॉन्टेक्स्ट में। बाकी भी आप देख लें तो आप कह दें कि अगर 87 पे टॉप है, अगर रिलेटिव ग्रेडिंग है, तो 85 पे जो है वो ए नेगेटिव वो शुरू कर देंगे। और अक्सर ही बहुत सारे कोर्सेज में सिर्फ एक बंदे को ए मिल रहा होता है, तो वो भी इतने क्लोज मार्जिन के साथ। तो ये चीज़ एक आई थिंक नहीं होनी चाहिए। इससे एक मतलब तो डिसहार्ट होता है कि मतलब उसने ये एफर्ट भी भी की। हाँ, तो ये भी शायद कोई फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन या आई डोंट नो, शायद अनफेयरनेस तो है इसमें, इट सीम्स। असल में ये जो बात हो रही है यहाँ पे, अब इस चीज़ को तो काफ़ी मतलब मैं उनको बुरा ही समझा जाता है जिसको रिलेटिव ग्रेडिंग कहते हैं। आज एक ज़माने में बहुत कौन दुनिया, सिर्फ पाकिस्तान की बात दुनिया भर में होती थी। लेकिन ये है कि जिस तरह भी मुसव्वर कह रहे हैं कि अच्छा जी एक को अगर रिलेटिव ग्रेडिंग है तो जी एक ही बंदा A1 पे आएगा या ए पे आएगा, तो मतलब आपने रूल आउट कर दिया कि मेरी क्लास में एक से ज़्यादा उस लेवल पे पहुंच सकता है, जो वाकई में सोचा जाए तो एक बड़ी अजीब सी चीज़ है। लेकिन आई डोंट नो क्या इसकी हिस्ट्री क्या है, देखना पड़ेगा लेकिन कि ये चीज़ आई कहाँ से, और आई थिंक इट्स ऑन इट्स वे आउट। मेरा अपना तो ये इंप्रेशन है इसके बारे में, लेकिन मेरा भी थोड़ा सा स्क्यूड किस्म का इनपुट हो सकता है इसमें। तो उसमें मुसव्वर आपसे मैं एक बात को थोड़ा सा और क्लियर दूँ, बिकॉज हमारी प्रीवियस डिस्कशंस में इस चीज़ को थोड़ा सा टच किया फ्रॉम डिफरेंट वेंटेज पॉइंट। आपके नज़दीक क्या ये सिस्टम के किसको क्या ग्रेड मिलना चाहिए, ये बिल्कुल डिसाइडेड सिस्टमेटिक तरीके से ट्रांसपेरेंट पहले समझ जाएगी कि आपका 85 से ऊपर आया तो ये ग्रेड है, 80 से ऊपर ये ग्रेड है, और ये यूनिवर्सिटी वाइड पॉलिसी है? या फिर आपके ख्याल से एक प्रोफेसर है, एक टीचर है, उसके पास डिस्क्रेशन होनी चाहिए है कि वो जज करे, और वो थोड़ी सब्जेक्टिव भी हो सकती है कि हाँ ये स्टूडेंट ने के मार्क्स में भी 95 आए हैं लेकिन या 85 आए हैं, लेकिन उसने प्रोजेक्ट में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी किया, एंगेज बहुत रहा है और मैंने उसकी इंप्रूवमेंट देखी है, बहुत अच्छी हुई है, तो ये तो A1 डिजर्व करता है। ये सब्जेक्टिविटी आ गई काफ़ी ज़्यादा, बट आई होप यू कैन सी के इसमें भी अपना एक रिस्क है, बिकॉज फिर सब्जेक्टिविटी आपने अगर अलाउ कर दी तो फिर हर टीचर की अपनी सब्जेक्टिविटी और डिस्कशन कुछ और हो सकती है। सो व्हाट इज योर व्यू ऑन दैट? आपके ख्याल से ट्रांसपेरेंट सिस्टम, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, ठा ये मार्क्स ये ग्रेड एंड ऑफ स्टोरी, या पर्सनल डिस्क्रेशन बाय द टीचर? व्हाट डू यू थिंक वर्क्स बेटर? आई थिंक दोनों का मिक्सचर होना चाहिए। जो पर्सनल डिस्कशन वाली बात है इसे आप बोनस पे रख दें, तो मेरे ख्याल से वो बेहतर, इसे एज अ बोनस कर लें। क्योंकि अब हमारे कॉन्टेक्स्ट में देखें, अभी तक जो नमल में हो रहा है, तो अब जो आपकी ग्रेडिंग है उसमें 100 में से 40% का जो यूईटी के बैचेस हैं उस पे उसका है ही नहीं। वो एज अ जिस तरह फाइनल पेपर आपका किसी जो बोर्ड में होता था कहीं और से आ जाता है, तो वो इस तरह होता है कि हमारे जो 100 में से ग्रेडिंग का 40% वो यूईटी बना के भेज रहा होता है। तो कभी कभार वो ऐसे भी होता है कि बिल्कुल आउट ऑफ कोर्स चीज़ आ रही होती है, तो उस पर फिर एट द एंड फिर जो हमारा इंस्ट्रक्टर है उसके हाथ में सारी चीज़ें चली जाती हैं। तो आई थिंक के जो इंस्ट्रक्टर वाला है ट्रांसपेरेंटली, आई थिंक इंस्ट्रक्टर पे होना चाहिए। इस काबिल पर इंस्ट्रक्टर को भी इस काबिल होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि अब आप क्लास से नाराज हैं तो आप ग्रेड तो गंदे करके चले जाएं, तो वो फिर उस पर भी चेक एंड बैलेंस थोड़ा सा लगा दें। मैं वैसे मैं श्योर नहीं हूँ इसका क्या बेहतर। थोड़ा सा अनफेयर सवाल था टू बी ऑनेस्ट, ये इसका मतलब मेरे ख्याल से किसी पास कोई इसका क्लियर जवाब नहीं है दुनिया भर में। इट्स नॉट ट्रिवियल क्वेश्चन, तो मेरे ख्याल से शायद पूछना थोड़ा अनफेयर भी था, लेकिन ये मुख्य सवाल है। हम लोग जब बात करके बैठते तो हम लोग किसी एक नतीजे भी नहीं पहुंच पाते इसके ऊपर, बट दैट्स व्हाई वी हियर। हम वी वांट टू सी कि आप लोग क्या सोचते हैं इस तरह के ग्रेडिंग के बारे में। तो थैंक यू फॉर योर। हम बिग नोज ऑफ टीचिंग की बात कर रहे हैं ना, हाँ, तो एक एस्पेक्ट तो बड़ा क्लियरली पता लगा जो इनमें से किसी ने पॉइंट आउट किया कि टीचर को थ्रेट नहीं करना चाहिए कि अटेंडेंस को या किसी और चीज़ को एज अ टूल के स्टूडेंट्स को थ्रेट कर रहा हो ना कि आपके मार्क्स कट जाएंगे या ग्रेड खराब हो जाएगा।
इसके बिल्कुल उलट मैं एक फिनोमिना पूछना चाहता हूँ जो शायद फौरन से नजर में ना आए, वो ये कि टीचर को ब्राइब करना चाहिए स्टूडेंट को। अच्छा यहाँ ब्राइब से मेरी मुराद क्या है? ब्राइब करने से मुराद मेरी ये है कि मैं कम कम पढ़ाऊँ, अच्छे अच्छे ग्रेड दूँ, ताकि आप लोग भी टीचर की अच्छी इवेल्युएशन करो ना। इवेंचुअली इंस्टीट्यूट्स टीचर के बारे में भी कुछ डेटा गैदर कर रहे होते हैं ना आप लोगों से, सेमेस्टर में या ईयरली आपको भी कुछ इवेल्युएशन फॉर्म्स आते होंगे टीचर्स के, आपने फिल करने हैं, सबमिट कराने हैं। तो टीचर फिर कि मैं कम पढ़ाऊँ, बड़े अच्छे अच्छे आप लोगों के साथ बातें शातें करूँ, किसी को डांटूँ ना, मैं काम भी ना कराऊँ किसी से, या थोड़ा थोड़ा काम कराऊँ, ग्रेड भी बड़े अच्छे दूँ, तो ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ब्राइब है जिन्हें मैं कह रहा हूँ ना। तो इस बारे में आप लोग क्या सोचते हो? सर अगर मैं स्टार्ट कर दूं, और आई डोंट थिंक कि स्टूडेंट्स इतने बेवकूफ़ होते हैं सर कि वो हमारे साथ कि वो आपको मतलब अच्छा, क्योंकि एनोनिमस होती हैं ऑब्वियसली जो स्टूडेंट एवेल्युएशंस होती हैं, तो आप बेशक उन्हें ब्राइब करें या अच्छे ग्रेड दे भी दें, लेकिन उन्होंने फीडबैक उसी लिहाज से देखना है कि जिस तरह आपने उन्हें पढ़ाया है। तो आई डोंट थिंक कि वो होता है। तो अब बिग नोज में मैं दो चीजें ऐड करना चाह रहा था कि अब यूनिवर्सिटीज में ऐसा अक्सर होता है कि जो टीचर जो नॉर्मली न्यू टीचर आते हैं उनका कोई टीचिंग एक्सपीरियंस भी नहीं होता, तो मतलब वो फर्स्ट आपको अक्सर जो प्राइमरी लेवल पे भी आप टीचर रखते हैं स्कूल्स के, उन्होंने भी कोई टीचिंग रिलेटेड कोई उन्हें डिप्लोमा वगैरह किया हुआ होता है, लेकिन यूनिवर्सिटी में नहीं होता। तो उसमें अब ऐसे मसला फिर ये आ जाता है कि आपको ऐसे टीचर भी मिल जाते हैं जिन्हें बिल्कुल पढ़ाना नहीं आ रहा होता। तो बस ये एक रिक्वेस्ट ये है टीचर से कि वो जब तक वो कम से कम उन्हें पढ़ाना ना आता हो वो टीचिंग अपनी स्टार्ट ना करें। बेशक वो 5-6 महीने का कोर्स वगैरह कर लें, उससे काफ़ी जो है ना वो स्टूडेंट्स की ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो इसमें एंड एक येट ये था कि हो सकता है उनकी डिग्रियां वो बाहर वाली हों, जिस तरह एमन ने या फारे ने शुरू में कहा था कि एंड मतलब वो तो दूर से लोग देख रहे होते हैं ना वेबसाइट पे, लेकिन असल में तो आपका लिविंग एक्सपीरियंस क्लासरूम के अंदर है। मैं एक चीज मैं अभी अभी एमन और फारे की तरफ आते हैं, आप दोनों के भी इनपुट लेना है इसके लिए। मैं से एक ऑब्जर्वेशन ये मुसावर के पॉइंट से कि आई वाज टॉकिंग टू 2 प्राइमरी स्कूल टीचर्स इंग्लैंड में जो पढ़ाते हैं, और कॉन्टेक्ट जो भी था आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि उनकी ट्रेनिंग क्या होती है। और आधे घंटे के एंड में मैं शर्म से पानी पानी हो जा रहा था कि मैं यूनिवर्सिटी टीचर बन के बैठा हूँ और मैं विदाउट एग्जैजरेशन मेरी ट्रेनिंग या मेरी असेसमेंट एज अ टीचर उसके 10% भी नहीं हुई, 20%, 10% पर हुई होगी। उन लोगों की जो 2 साल तक ट्रेनिंग होती है, उनकी क्लासरूम, उनकी ऑब्जर्वेशन होती है, उनको पोर्टफोलियोज बनाने होते हैं, उनको लेसन्स प्लान करने होते हैं, उनको सिखा सिखा के और फिर बार बार इवैल्यूएशन होती है उनकी। भाई प्राइमरी स्कूल टीचर्स हैं, और यहाँ पे जबकि यहाँ पे टीचिंग हमें पढ़ाया जाता है कि कैसे पढ़ाना है यहाँ पे, लेकिन नॉट टू दैट लेवल और नॉट दैट स्ट्रिक्टली। हम लोग पढ़ाना शुरू कर देते हैं, साथ साथ हमें फिर ये भी साथ साथ कोर्सेज करने पड़ते हैं कि हाउ टू टीच, लेकिन नॉट एज इंटेंसिव एज प्राइमरी। तो ये मैं सॉरी जो बात कर रहा है couldn't agree more। और मुझे वाकई समझ नहीं आता कि ये कैसे हो गया कि हमने यूनिवर्सिटी टीचर्स को ऐसे पढ़ाने दे दिया। और मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। और प्राइमरी टीचर्स को तो हम मतलब बहुत स्ट्रिक्ट प्रोसेस से गुजारते हैं कम से कम यूके में। तो सॉरी इधर से ऑब्जर्वेशन, लेकिन अगर वापस वो एमन और फारे की तरफ आए, इस चीज़ को कंक्लूड करें इस क्वेश्चन को कि आपके ये जो बिग नो वाली लिस्ट है उसमें समथिंग इन योर माइंड जो कि आप हाईलाइट करना चाहें, या समथिंग रिलेटेड जो हमारी डिस्कशन पहले मुसव्वर के साथ हुई थी। So I can, I would like to add that some instructors, I remember what happened was sometimes they, because obviously there's a limited amount of time in a semester to cover the course. So sometimes when students have too much questions in class, instructor says, well, na puche, course khatam karna hai. And so, I mean, instructor is correct, I mean, to an extent, because obviously he has to cover the course, but students also suffer because they cannot ask the questions that they want to ask. So I don't know, this is a problem that quite a few students face, especially when instructors are short on time, and it's not their fault. So, but it's still something that, quite a few students, have problem with. So that's something I wanted to add. Right. ये कितना रेजोनेट कर रहा है जिन्हें नमान, हम दोनों को समझ आ रहा है कि ये बात वही पहले 2-3 वो कवरेज वाला जो ट्रेड ऑफ है।
versus learning पे emphasis. Coverage So I the think best. नोमान का सवाल का जवाब एमन तो ऑलरेडी दे चुकी हैं कि वो जो उन्होंने एक रेफरेंस दिया था कोर्स का जिसमें इंस्ट्रक्टर एंटरटेनमेंट वगैरह कर रहा था, शी डिडंट लाइक इट. तो मुसव्वर ने भी कह दिया कि स्टूडेंट्स इतने बेवकूफ़ नहीं होते जितने उनको समझा जाता है. सो वी शुड टेक द वर्ड फॉर इट. अगर हम आप थोड़ा सा जूम आउट करें टीचर और कोर्स लेवल से, परहैप्स पहले करिकुलम लेवल पे जाएं और फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे, यूनिवर्सिटी के एनवायरनमेंट से रिलेटेड. तो करिकुलम लेवल पे आई कैन सी 3 रेडिकली डिफरेंट हमारे पास स्टूडेंट्स हैं. तो वो नॉर्थ से साउथ तक, एक प्योरली इंजीनियरिंग ओरिएंटेड यूनिवर्सिटी के अंदर एक डिपार्टमेंट है कंप्यूटर इंजीनियरिंग था, वो भी हेविली इंजीनियरिंग ओरिएंटेड ही होगा. येट एमन का वेरी इंटरेस्टिंग करिकुलम का बैलेंस्ड किस्म का कोई स्ट्रक्चर लग रहा है इट सीम्स, क्योंकि हबीब में ह्यूमैनिटीज और लिबरल आर्ट्स वाली फाउंडेशंस भी हैं. तो ये मैं चाहता हूँ थोड़ा सा एक्सप्लोर हो, परहैप्स मुसव्वर के नमल में समवेयर इट वुड लाई बिटवीन द टू, कि ये थोड़ा सा अगर बैक एंड फोर्थ जा सके हम, कि एट द एंड ऑफ द डे एक अच्छा कंप्यूटर साइंटिस्ट प्रोड्यूस करने का सारे क्लेम करेंगे, और एटलीस्ट एस्पिरेशन तो रखेगी यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट आपका. लेकिन उसमें करिकुलम, राइट, कैन यू सी कि एक जूम आउट कर रहे हैं हम एक कोर्स के एक टीचर से हट के, अब हम पूरे प्रोग्राम के करिकुलम के स्ट्रक्चर पे अगर बात करें, तो कैन यू से समथिंग देयर, यू नो, कैन यू आइडेंटिफाई समथिंग इज गोइंग ऑन देयर जब आप पूरे क्या हम देखते हो? या इस तरह हम पूछना चाह रहे हैं कि करिकुलम क्या होना चाहिए उनकी नज़र में, या अच्छा करिकुलम किस तरह दिखता है? हाँ, यानी कि ये इनका अपना एक्सपीरियंस, यानी कोर्सेज जो कि आउटसाइड ऑफ कंप्यूटर साइंस भी हैं, राइट. जिस तरह फारे ने वाई वाली बात की थी कि एक अच्छा टीचर वो है जो वाई को इलेबोरेट कर बैठता है शुरू में ही, एट द स्टार्ट ऑफ थिंग्स, राइट. लेकिन वो थी कोर्स लेवल बात थी. तो क्या करिकुलम लेवल पे भी आप लोगों को किसी ने समझाया? फॉर इंस्टेंस, तो आई थिंक हबीब का बहुत ही इंटरेस्टिंग, हाँ, फॉर इंस्टेंस मैं तो क्योंकि इसका एडवांटेज लेना चाह रहे हैं, हमारे पास एमन है, हबीब यूनिवर्सिटी से हैं, तो ऑफ कोर्स अब ये हम किसी यूनिवर्सिटी का एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम भी नहीं है ना, बट एमन हैज़ बीन वेरी ऑनेस्ट एंड रिफ्लेक्टिव अबाउट एवरीथिंग दस फार. तो एक ऑफ कोर्स यूनिवर्सिटी पिच करती है अपना आपको कि हम स्टूडेंट्स को बैलेंस्ड किस्म का सिटीजन रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट. सो आपका स्टूडेंट पर्सपेक्टिव भी इसी तरह से अलाइंड है? डू यू सी के आपको कोर्सेज आउटसाइड ऑफ कंप्यूटर साइंस ने आपको क्या दिया, फॉर इंस्टेंस? So computer science के outside courses, I think in general एक grooming होती है, like, you know, having conversation with people, doing teamwork, not just like, you know, with your classmates, but also maybe from different batches and from different majors. We were like groups of arts and computer science students, एक वो वाला perspective. और I think it also gave us a lot of perspective about, क्योंकि like हबीब के अंदर ही तो नहीं, बट इन जनरल एक होता है, साइंस वाले बच्चे बहुत बोलते हैं कि लाइक, यू नो, आर्ट्स वाले बच्चे को कुछ आता नहीं है, और आर्ट्स वाले बच्चे बोलते हैं लाइक कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे क्या करते हैं, weird stuff. So I think it gave us an opportunity to understand each other. The work that they do is not easy. The work that we do is not easy. There's like, you know, what they are doing is equally important as what we are doing. And other than this, it also gave us like a practical implementation of how technology can be used, like, you know, public spaces को interactive बनाना. For example, ये project था, we were there in Lahore, और हम लोग वहाँ पे like literally we were interacting with the public in Lahore. We were making projects, we were displaying them. We brought all the children from the different streets and we were playing with them, interacting with them. So I think these are not just like एक curriculum theory और वो वाली studies से हट के, in general, like, you know, the basics that you need to live a life, वो वाली चीजें देखने को मिलती हैं from this. Other than this, within the computer science, what I understand from the curriculum point of view is that there are a lot of gaps. For example, gaps between the industry and what we study in computer science. For example, like बहुत सारा ऊप पढ़ा हमने, programming fundamentals पढ़े,
But when I'm going for a job interview, that is exactly not what is being asked from me, right? The structure is completely different. So am I even prepared for that or not? Are universities even teaching that or not? And I think it involves a lot of self-learning. Like in my case, matlab agar if I would not have done that self-learning, I would not be here, or I would not have explored the things that I've done in life. For example, being a part of different, like, programs, WTM or Podium, I would not have been part of any of those programs. So this is very interesting. I don't want to like put you on the spot, but off the top of your head, कोई आपके ज़हन में ऐसी नॉलेज या स्किल या कोई कॉम्पिटेंसी ऐसी है जो आपको लगा कि आपको चाहिए थी जॉब के लिए और आपने खुद लर्न की, लेकिन यू विश कि आपको वो यूनिवर्सिटी से मिलती? मुझे यूनिवर्सिटी से मिल गई। नहीं, आपको यू विश कि आपको मिलती। सारे बोला कि आपको फंडामेंटल मिले, आपको मिला, लेकिन देयर वाज समथिंग यू डिड नॉट गेट। So we took a lot of courses, for example, data structures or algorithms. But I could not learn a lot of problem solving. For example, जो interviews में directly मुझसे पूछा जाए कि भाई ये dynamic programming का सवाल ही solve करके दें, I would not be able to solve that because मुझे उस तरह की problem solving कराई नहीं गई। maybe like बहुत ज़्यादा कोशिश की हर इंस्ट्रक्टर ने अपने लेवल पे कराने की, but exactly what industry would ask, what kind of practice that would require, that is, I think, missing. I had to do a lot of HackerRank or a lot of lead code, and some instructors would arrange a lot of sessions, I would say like personal sessions, for us to do coding challenges and coding practices, but that would not be a part of curriculum, like an official curriculum. ये तो देखो ना, जो चीज है जो to place your foot inside the door, जो interview वाले aspect में ना, but since आप job पे हो, I'm guessing, right? Yes. And it's been how many? It's been more than a year. Right. तो उस sense में, यानी pass the interview. Yeah. Anything interesting that comes to your head कि you wish कि ये वाला aspect university में किसी तरीके से polish किया जा सके, not the interview, वो part clear हो गया आपका? On top of my head, I would say just the personal grooming as well, how you present yourself in front of the interviewers. Like you might be you know a lot of computer science, you can do any question that is given to you, but you cannot really tell that about yourself to the interviewer, or like just the introduction, you cannot introduce yourself to the people about what you have done or what you can do. I think that is something that Habib is taught, but now that I also take interviews, I see that is missing from a lot of candidates. Right. I think one of the toughest questions, ये वो जो for granted लिया जाता, tell us something about yourself. Yes. वो जो self की exploration, वो सबसे toughest questions है. But thank you, Aiman. मुसव्वर, आप LDS का आपने नाम भी लिया, Literary and Debating Society. How do you connect that to आपकी कंप्यूटर साइंस की एस्पिरेशंस हैं? उसमें लिटरेरी डिबेटिंग सोसाइटी, इस तरह की चीजों का क्या स्कोप है? हम जंप कर रहे हैं वो करिकुलम से सोसाइटीज की साइड पे या दूसरी साइड पे, या आई एम गेसिंग के जो मुसव्वर का करिकुलम रहा है वो उस तरह से ह्यूमैनिटीज ओरिएंटेड वाला नहीं रहा हुआ, लेकिन तो तुम हाँ, उधर मेरा क्वेश्चन ये था कि हमारे से अक्सर आपसे भी पूछते होंगे और स्टूडेंट्स पूछते हैं कि ये फॉर एग्जांपल ये XYZ सब्जेक्ट है, मैं तो कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ ना, ये मुझे XYZ सब्जेक्ट पढ़ा क्यों है, मुझे इसका क्या फायदा है ना, मैंने इसको कहाँ यूज करना है। इस तरह के क्वेश्चंस हबीब में तो ये था कि उनका बड़ा, तो जो मुसव्विर या फारे के केस में शायद होगा कि जहाँ ये जो साइट के या दूसरे कोर्सेज हैं, दूसरी डोमेन्स के जो कोर्सेज हैं, वो कहीं इस तरह तो नहीं होता कि जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं या कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें ये फील होता है कि इनकी कोई अहमियत नहीं है, हमें बोझ डाल दिया हमारे ऊपर, या क्या पर्सपेक्टिव होता है? जी मुसव्वर, you on the side. ओके तो
यस सर, एग्जैक्टली इस तरह होता है। अक्सर हम लोग ये मतलब क्लास में भी ये डिस्कशन हो रही होती है, और जो साइड के कोर्सेज होते हैं उन पे यही होता है अक्सर स्टूडेंट्स का कि ये हम क्यों पढ़ रहे हैं इस तरह की चीज़ें, इनका क्या इंडस्ट्री में कोई रेलेवेंस है या नहीं है। तो अब ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट ये चीज़ वेरी भी करती है। अब किसी का अगर फिलॉसफी वगैरह रिलेटेड कोई इंटरेस्ट है या कोई हॉबी वगैरह है, उसके लिए तो ये एक्सेप्टेबल है ये चीज़। लेकिन अब आप सब बंदों के लिए ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप लिबरल आर्ट के कोर्सेज ले आए कंप्यूटर साइंस के अंदर। वो इस चीज़ को मतलब अंडरस्टैंड करना उनके लिए मुश्किल हो रहा होता है। आल्थो उनका भी एक इनडायरेक्टली इफेक्ट तो होता है, आपकी मतलब क्रिएटिविटी इनहेंस हो रही होती है, और भी आपके जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं वो उनसे बेहतर हो रहे होते हैं। लेकिन वो मेजॉरिटी आप कह लें वो यूजलेस ही समझती है इस तरह की जो जो साइड कोर्सेज आप कह लें। हाँ बट लेकिन हम तो तुम्हारी बात करेंगे ना कि तुमने प्रेसिडेंटशिप, क्योंकि इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, एक लिटरेरी एंड डिबेटिंग सोसाइटी का तुमने प्रेसिडेंट के लिए खड़े हुए हो या किसी तरह ऑप्ट किया है, तो इट सीम्स कि तुम्हारे लिए कुछ चीज़ इम्पोर्टेंट है कि ये लिटरेरी साइड ऑफ लाइफ जो है। तो अपनी अगर तुम बात करो कि व्हाई इज दिस सो इम्पोर्टेंट। सर उसका अगर मैं स्टार्ट करूं अपनी स्कूल, जब मैं मैट्रिक मतलब स्टार्ट होने वाली थी, उस वक्त मैंने एक ये चीज़ फील की थी कि यार मेरे अंदर मतलब कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है ना। मैं मतलब पब्लिक स्पीकिंग मेरी बहुत बुरी है, और मतलब उस वक्त मैं ये फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता उस पर काम करना शुरू किया। मेरे स्पीचेस वगैरह में थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हुआ, ऑडियंस को फेस करना। फिर कॉलेज लेवल पे मैंने मतलब मुख्तलिफ डिबेट्स वगैरह में पार्टिसिपेट में करता रहा। तो वो इंटरेस्ट थोड़ा सा था एक्स्ट्रा करिकुलर की तरफ, जो कि मुझे एलडीएस में फिर लेके आया। आल्थो एक मैं कंप्यूटर साइंस से तो इसका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, मतलब लेकिन वो मेरा जो इंटरेस्ट था उन चीज़ों में वो मुझे बेसिकली फिर एलडीएस की तरफ लेके आया। तो डू यू थिंक कि मूविंग फॉरवर्ड, अब तुम्हारा लास्ट ईयर है, आगे जॉब वगैरह आएगी, तो ये चीज़ें तुम्हें हेल्प करेंगी ऑन जॉब एज वेल। यस सर, जो आपके मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो इम्प्रूव होते हैं ऑब्वियसली इन चीज़ों के से। तो उसमें तो ये हेल्प करेंगी कम्युनिकेशन स्किल्स की हद तक। और बाकी मैं पिछले कोई दोस्त मतलब 1.5 साल मैंने ईमेल्स भी लिखी हैं अच्छी खासी, तो मैं हैंडल करता था। बेसिक मेरा ये भी काम था प्रेसिडेंट बनने से पहले। तो वो हो गया, और इवेंट मैनेजमेंट के स्किल तो वो मतलब एक साइड पे आ जाते हैं, वो चीज़ें बहुत इम्प्रूव हुई हैं। तो बेसिक जो हेल्प करेगी वो मुझे लगता है कम्युनिकेशन स्किल्स वाइज करेगी। बाकी आई डोंट थिंक यस कोई है इन जनरल लाइफ में करेगी इवेंट मैनेजमेंट और इस तरह की चीज़ों में। और लेकिन जो जॉब वाइज है वो कम्युनिकेशन स्किल्स। आई थिंक मुसव्वर कुछ चीज़ें नहीं भी बता रहा, वो नमल की पहली स्टूडेंट काउंसिल जो थी उसका भी ये जनरल सेक्रेटरी भी था। और एमन ने जिस तरह प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात की है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग सिर्फ कॉम्पिटिशनल ही नहीं होती ना, हम इंसान भी तो हैं एट द एंड ऑफ द डे, और मे बी एट द स्टार्ट ऑफ द डे। तो whichever way you look at it, तो वो आप जिस भी जाके टीम का पार्ट बनेंगे, मतलब जहाँ भी जाएंगे मतलब आइसोलेटेड तो नहीं होंगे वहाँ पे, आपकी ऑन जॉब भी प्रॉब्लम्स होंगी वहाँ पे भी। कोई वर्कर्स यूनियंस इंग्लैंड में तो, स्कॉटलैंड में तो, हर जगह बाय डिफॉल्ट होती है, पाकिस्तान में तो वहाँ पे भी कुछ मसाइल होंगे एनीवेयर यू जॉइन। तो एज एन इंसान वहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेंगी। सो आई थिंक दीज थिंग्स डू गो अ लॉन्ग वे। फारे क्योंकि एट द स्टार्ट ऑफ हिज अंडरग्रेड है, बट आई वुड स्टिल लाइक हिम टू एक्सप्लोर अ लिटिल बिट के जो व्यू था तुम्हारा एक इंजीनियरिंग हैवी, और वो तुम्हारी चॉइस भी यही थी ऑफ कोर्स, चूज यूनिवर्सिटी चूज करते हुए, एंड इट टर्न्ड आउट टू बी ट्रू आई गेस। जो व्यू, जो अब इंटरनल व्यू है तुम्हारा, अब तुम इनसाइड द यूनिवर्सिटी हो ना, कि एक इंजीनियरिंग डोमिनेंट यूनिवर्सिटी है, उसका काम भी इंजीनियर्स प्रोड्यूस करना है,
तो क्या ये जो सॉफ्टवेयर जिसको कहा जाता है सॉफ्ट स्किल्स, ये आप लोगों को कैसे सिखाई जाती है? क्योंकि इंजीनियर्स दूर से भी रोबोट्स की तरह ही नजर, मतलब ऐसा भी लगता है कि रोबोट जा रहे होंगे, इंजीनियर्स हैं, कोई वक्री शय है, इंसान फर्क होंगे और इंजीनियर्स फर्क होंगे। तो ऐसे ही कोई व्यू है इंटरनली या करिकुलम के थ्रू या एक्स्ट्रा करिकुलर के थ्रू एंगेज किया जाता है आप लोगों को इस पर? So at GIK, obviously, the courses focus on engineering side, but we also have a few courses for liberal arts, and I personally think liberal arts courses are important because they give you skills, daily skills. For example, in first semester, we had a course called English and Communication Skills, and we studied English grammar, we studied English reading, we studied the basics of English, and obviously we need this skill as engineers so that we can communicate our ideas effectively. So obviously, without liberal arts courses, I don't think we can utilize our engineering knowledge effectively. So I think those courses are very important as well. And overall, regarding extracurriculars and having fun at GIK, obviously, there's a lot of room for that. Obviously, when I came to GIK, I was surprised by ragging. Like there was a lot of ragging, and it was sort of like, obviously many people didn't like it, and I also didn't, but it was sort of like a social opportunity at GIK. And since then, the seniors have been extremely nice to me, introduced me to so many societies, and I've had such a difficult time choosing which society I want to go into. There are so many for each faculty. So overall at GIK, I think there is a perfect balance of tough engineering courses, but at the same time, you can have fun with your friends in societies or going to have some food at the tuck shop. And also there are quite a few. I think every semester there is at least one liberal arts course at GIK. So because we have a management science department at GIK, so we always have at least one humanities or management science course at GIK, and those courses are definitely, I think, as important as the engineering courses. So एक चीज बड़ी, I think it's somewhat heartening to see this कि although आप लोगों ने कुछ नेगेटिव पॉइंट भी हाईलाइट किए हैं स्टूडेंट एक्सपीरियंस और क्या इश्यूज हैं जो आप फेस में, बट जनरली you have been very gracious and generous towards your institutions, और आपने उसको अच्छी चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से appreciate किया है. और ये I would say that speaks very well of obviously of your institutes but of yourself as well, because बड़ा आसान है just to pick out the thorns and the negatives और बस उसी पे आप 2 घंटा बात कर सकते थे, मुझे पता है, लेकिन you have been very fair and very gracious that way, so I do appreciate that. तो इसी अब कोशिश करें इसको conclude करने की and taking climbing a bit further, a few thousand feet, and say कि आपका थोड़ा क्लासरूम की डिस्कशन हुई, थोड़ा सा करिकुलम के एक्सपीरियंस की बात हुई, लेकिन अगर हम अब पूरे आ जाएं, we have touched upon this aspect already, जो आपका स्टूडेंट एक्सपीरियंस है कि जब आप एक यूनिवर्सिटी में जाते हैं, क्या आपकी एक एक्सपेक्टेशन होती है of the entire student experience, and that goes from your time outside the classroom, आपकी अगर ट्रांसपोर्टेशन है, कैफेटेरिया है, the behavior of the staff towards you, और Aiman, आप अगर उसमें if you wish you can highlight your vantage point as a female student as well, कि क्या आपको वो comfort वहाँ पे मिलता है यूनिवर्सिटी में जो आपको लगता है कि होना चाहिए है to be able for you to go out confidently and explore university life as well as your male peers at the university. So now we're talking about not the classroom, not the curriculum, everything else but this. You see what I mean? The whole university experience, और वो बिरयानी के अंदर कॉकरोच का इशू भी हो सकता है और वो ट्रांसपोर्ट के इशू भी हो सकते हैं. So the question would be, let's if I could come into the question, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है एक यूनिवर्सिटी एक्सपीरियंस से, और इसी से रिलेटेड आप उस पर कमेंट कर सकते हैं कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी और रियलिटी क्या मिली आपको in a both positive and negative way. Aiman. I think so for me, going into the university life, the expectation was कि 4 साल बहुत important साल हैं, and लेकिन बहुत मजे के साल भी होते हैं, like party होगी, you will be independent, or
ये वाली expectations भी कुछ थी, but eventual expectation ये होती है कि get a decent job, graduate and nicely. But I think it's much more than that. When I think about university now that I've graduated, I think about the people I have spent my time with. That is like one of the most important part of my life. And it's very important to be with the right people, to make the right friends, and to also make like, you know, a perfect balance between enjoying your university life and also taking your courses like, you know, seriously. Because काफी दफा ये होता है कि either you are with the company who thinks that, oh, you won't get this time back, you can just like, you know, skip this class and chill. And honestly, I have done that once or twice, but I regret that doing that, because now that I look back and I would be like, shit, that was such an important course. I wish I would have taken it more seriously. I think those were some mistakes that a student can make in the student life. And also, like, you know, not taking it too seriously as well, because it's the perfect time to, like, you know, do your trial and error in these 4 years. Like, as a computer science student, you can try on different tracks, what you want to choose further on in your career. Either you want to go for game development, programming, either you want to do something else after, you know, computer science. So it's like the perfect safe space for you to explore yourself and what you want to do for the rest of your life. I think that is, I guess, the gist of what the university life is for me. And just making the best out of your experiences, your courses, your friends, those memories. I think this is what it is for me. एमन, अगर मैं इसी से रिलेटेड बात जस्ट ऑन द साइड पूछ सकूं कि आप ही के बैच के कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट्स जो अब 1 साल प्लस हो गया है, Yes. have there been some students जो कि नॉन कंप्यूटर साइंस डायरेक्शन को अब परसू कर रहे हैं equally successfully and equally happy Yes. in doing that? So there is this friend of mine who is now pursuing some like arts course, I don't know, humanities course now, and he was a computer science major. And what the best part was, he also did his minors in some humanities course, and then now he's pursuing international studies and higher studies in some other area. Right. So yeah, definitely. नहीं तो आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने की है कि यूनिवर्सिटी एक सेफ स्पेस होनी चाहिए फॉर एक्सप्लोरेशन of all sorts, positively speaking. Yes. Thank you. Musawar, if you can add to that. यस सर, उसमें अब एक दो चीज़ें जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी यूनिवर्सिटी में, एक तो जो डाइवर्सिटी है, मतलब हर शहर तो नहीं, काफ़ी सारे शहर से आ रहे हैं स्टूडेंट्स, मतलब एक वैरायटी है यूनिवर्सिटी के अंदर। और दूसरी जो चीज़ थी वो जो आपकी जो सोशल लाइफ है आउटसाइड द करिकुलम, जो सोसाइटीज़ की ख़ास तौर पे रोल है, वो नहीं था। और दूसरा ये था कि वो एक नोशन सा था कि भाई सारे मतलब यूनिवर्सिटी में सब कुछ चिल होता है और रिलैक्स। आई डोंट थिंक कि वो उस तरह एग्जैक्टली होता है। आप मतलब उस तरह रह के सरवाइव कर सकते हैं, मतलब आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है, तभी आप इसमें आगे चल सकते हैं। बाकी वो जो थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन था कि एज अ स्टूडेंट एक्सपीरियंस मतलब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं डिपार्टमेंट से, तो उसमें अब ये एक पॉइंट है कि आप जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कम से कम जो स्टूडेंट एक्सपीरियंस है ना, यूजर एक्सपीरियंस आप कहते हैं, उसे सीरियसली दे। जो हम लोग फीडबैक देते हैं उस पे कोर्स एवेल्युएशन वाला, अब ये ना हो कि आपने एक बंदे का गंदा फीडबैक दिया, आप अगला जो सेमेस्टर है उसे ही आप असाइन कर दें। ऑब्वियसली इसमें फिर आपके जो डिपार्टमेंट के कंस्ट्रेंट आ जाते हैं, आपके पास फैकल्टी ही लिमिटेड है, तो वो तो चलें अंडरस्टैंडेबल सी चीज़ है। लेकिन आप ये ना करें कि मतलब कॉन्स्टेंटली एक बंदे का गंदा फीडबैक आ रहा है, आप उसी को ही वही क्लास दोबारा असाइन कर रहे हैं, तो ये एक चीज़ नहीं होनी चाहिए। और ख़ास तौर पे जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस आप लेते हैं, तो जो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स को, उनमें उनकी राय को थोड़ी सी अहमियत दे दें आप। मतलब कि अब पॉलिसीज़ बन रही होती हैं, आपने कल बंद करना है जी इंस्टीट्यूशन, कोविड हो गया, मतलब कोविड तो चले अब तो 1.5 साल हो गया कोविड है। अब अगर आपने वो हम लोगों ने प्रोजेक्ट करने थे, अभी भी रिसेंटली ऐसा हुआ
बड़ी ईद पे भी हम लोगों ने घर नहीं जाना था, लेकिन उसके बावजूद हमारा कैंपस बंद हुआ और मजबूरन हमें निकलना पड़ गया। होंगे कंस्ट्रेंट्स होंगे, काफ़ी वो एक्सप्लेनेशंस भी देते रहे एडमिनिस्ट्रेशन से भी, लेकिन पॉइंट ये है कि हमारी भी वो डिसीजन लेने से पहले आप थोड़ी राय ले लेते। मैं भी आप कैंपस बंद कर दें, हम हॉस्टल में रुकने के लिए तैयार थे। मैं अपने क्लास के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। तो मतलब ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि आपने मतलब वन साइडेड आपने डिसीजन ले लिया जिसका इम्पैक्ट भी डायरेक्टली स्टूडेंट्स पे पड़ रहा है और आप उस पर इम्पोज वो करना चाह रहे हैं। तो आई थिंक वो फिर एनवायरनमेंट वो तभी बेहतर हो सकता है जब आप वो वैल्यू करें वो स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस को। इसी तरह बहुत सी जो आउटसाइड आपकी लाइफ की चीज़ें हैं स्टूडेंट लाइफ की, जैसे मैथ्स हो गया या और भी इस तरह की आपका लिविंग एक्सपीरियंस है, वो चीज़ें अफेक्ट कर रही होती हैं। तो उनमें मेरा बस यही पॉइंट है कि जो स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस है उसको थोड़ी आप वैल्यू दिया करें ज़्यादा, और उससे मतलब वो चीज़ें ताकि इम्प्रूव हों। आई थिंक जिस तरह पहले बात हुई कि एक टीचर अच्छा वो होता है जो स्टूडेंट्स के लिए एम्पैथेटिक हो, उनका पॉइंट ऑफ व्यू अंडरस्टैंड कर सके, टू पुट himself or herself in the student's shoes in certain situations. So just like that, at another level, institution को भी same काम करना चाहिए students के बस मतलब point of view को incorporate करना चाहिए, understand करना चाहिए। completely true। बिल्कुल, और ये मेरी student की voice I think पाकिस्तान में in so many ways वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स को लुक डाउन किया जाता है, तो वो होते होते बिल्कुल ही स्टूडेंट की वॉइस खत्म ही हो गई है। मैं एग्जैक्टली ये कहने वाला था जुनेद कि वो थोड़ी हमारे कुछ मुल्क का डायनामिक और कल्चर भी है, उसमें कुछ चीज़ें बहुत अच्छी भी हैं वेस्ट के मुकाबले में आई वुड से, लेकिन ये चीज़ के एक बहुत ही वर्टिकल किस्म का अथॉरिटेरियन किस्म का एक ओवरऑल एक कल्चर सा है इन सम प्लेसेस। तो यहाँ पे वेस्ट में मतलब ऑब्जर्व मैंने यही किया है कि स्टूडेंट काउंसिल का फॉर एग्जाम्पल जो प्रेसिडेंट है वो यूनिवर्सिटी के सेनेट में बैठा हुआ होगा, तो एक वॉइस जो है उस लेवल पे जा रही है। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की जो फॉर्म्स हैं, मतलब वो और उसके अगेंस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे बड़ा क्लियरली रूल है कि एकेडमिक जजमेंट कैन नॉट बी चैलेंज। तो एक एकेडमिक की प्रोफेशनल रिस्पेक्ट, मैंने अगर एक जजमेंट कर दिया एक ऐसे को C+ मिलेगा तो इसको आप चैलेंज करना शुरू कर दें तो नो एंड टू इट। बट ऑन द अदर हैंड जैसा कि बात मुसव्वर करे भाई प्रैग्मेटिक किस्म की चीज़ें हैं जो कि आपकी डेली लाइफ इम्पैक्ट कर रही हैं, तो जो स्टेक होल्डर है उसका इनपुट तो देना बनता है। गुड पॉइंट। अफारे आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? I completely agree with Musawar about what he said, that students, they don't have any say usually. And usually it's the faculty that teaches the students. So usually it's the faculty and the students that know what is best for them regarding the exams or regarding how, but the administration is usually governed by people who are not really interacting with the students and are not really interacting that much with the faculty either. So there is a communication gap. And at GIK, there is this issue that I'd like to highlight, that once a decision is made by the administration, for example, final exams are going to be conducted over the weekend, or there is going to be a final exam, a 3-hour final exam at 11 p.m. Like when there are decisions like this, and students are, you find them in a really tough spot, because they obviously throughout the semester they've been dealing with all these deadlines, and they have been trying their level best to meet all those deadlines, and then but the university still makes some decisions which don't really take into account the students' needs, and students don't really have a way of conveying to the university, the administration, their problem. So I do think that at least at GIK there is this issue that needs to be addressed, where the students, they cannot express to the administration there is this issue or they're having problem with this, so kindly take a look into it. So there is a communication gap, which I think should. अच्छा, ये if we can go back to Aiman, क्योंकि ये जो student की voice है, ये is that the case at Habib as well, you think? Especially क्योंकि वो liberal arts focused उनका है थोड़ा सा, तो वहाँ तो they would want students जो कि तो एक अच्छा citizen वही होगा जो express कर सके खुल के और positively वो किसी जगह लेके जा सके ना
अपने इदारे को भी या मुल्क को. तो do you have the same student experience at Habib? I would say that it would have been like not completely कि ignore कर दिया जाए students को, ऐसा कभी भी नहीं हुआ. Like there has always been some progress about the complaints that we have talked about or spoken about. So there always has been some progress. Maybe entirely वो उस चीज को resolve नहीं कर सकते हो या करना ना चाहते हो, but they like the least they would do is at least listen to us. They would not be like closed doors on our faces. They would not do that. Right. जबरदस्त. Thank you. अच्छा, यहाँ से आप कंक्लूड करते हैं. अगर आप लोग मुझे अगर इजाजत दें एक लास्ट क्वेश्चन करने की, बट विल ट्राई टू सी कि अगर वी कैन गेट क्विक इनपुट फ्रॉम आवर गेस्ट ऑन इट. और वो इज बिकॉज हमने क्लासरूम देखी, थोड़ी सी करिकुलम देखा, यूनिवर्सिटी एक्सपीरियंस देखा, बट देयर आर सम थिंग्स व्हिच आर इम्पोर्टेंट आउटसाइड एंड बियॉन्ड द यूनिवर्सिटी. और उसमें फॉर एग्जांपल इट कैन बी पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस. दुनिया भर में काफ़ी हो रहे हैं. पाकिस्तान ट्रेडिशनली उसके अंदर लैग करता है अपने नेबर्स के मुकाबले में या और सिमिलर कंट्रीज के मुकाबले में भी. और दूसरा बियॉन्ड क्लासरूम इज जॉब प्रॉस्पेक्ट्स, फाइंडिंग द राइट जॉब, बीइंग वेल प्रिपेयर्ड फॉर योर इंटरव्यू, डूइंग वेल व्हाइल एट वर्क. इन चीज़ों में आपको क्या लगता है कि आपको क्या सपोर्ट मिलनी चाहिए है, या मिली आपको बहुत अच्छा लगा, या आपको फील हुआ कि ये मिलती तो मेरा काम बहुत आसान हो जाता, ये एक अपॉर्चुनिटी आपसे मिस हो गई विच यू कुड हैव गॉटन अगर आपको यूनिवर्सिटी से सपोर्ट मिलती. नॉट टॉकिंग अबाउट आउटसाइड द यूनिवर्सिटी, foreign admissions, international competitions, job opportunities. इसमें आपको क्या सपोर्ट आपको लगता है यूनिवर्सिटी को करनी चाहिए आपकी? So at GIK, I think there is progress being made for students wanting to participate in competitions. For example, and what they have done is, because we already have so many societies, what GIK administration has done is they've sort of they actually do provide some funding to the students as well, to the societies. If you like, I've heard that they do that. If you request some funding and if you provide a report sort of thing and explain to them why you need this funding. So I think there are steps which are being taken in the right direction. For example, there is a society at GIK called Team Invictus, and they primarily specialize in making remote controlled aircrafts. So there was a competition last year internationally based on the same thing, and it was participated by over 100 universities worldwide, and GIK came second. So I think that GIK is making progress in that regard, and I think the solution is to maintain the pace and invest even more in the societies and encouraging more students to participate. एक तो हमारा बड़ा क्लियर सोल्यूशन इज फाइनेंशियल सपोर्ट कि इसको इतना इंपॉर्टेंट समझा जाए कि इसके ऊपर पैसे इन्वेस्ट की जाए. दैट्स अ वेरी बोथ इजी एंड डिफिकल्ट सॉल्यूशन इन सम वेज. वेरी इंटरेस्टिंग. वकात मैं एक पूछना चाह रहा था जो इससे रिलेट करता है, लेकिन थोड़ा सा दूसरी साइड पे. जैसे हमने बिग नोज ऑफ टीचिंग पूछे थे ना, तो क्या इन लोगों के ख्याल में कुछ इस तरह की एडवाइस करेंगे अपनी यूनिवर्सिटी को स्पेसिफिकली या इन जनरल बाकी यूनिवर्सिटीज को भी कि ये काम आपने नहीं करने, अगर ये किए तो यूनिवर्सिटी का कल्चर या लर्निंग एक्सपीरियंस स्टूडेंट का ये बिल्कुल खराब हो जाएगा? कि आप मतलब ऐमन साहब, आप इन दोनों चीजों को एक साथ ही बेशक रैप अप कर सकते हैं कि सपोर्ट यू आउटसाइड द यूनिवर्सिटी एंड थिंग्स यू विश एट द यूनिवर्सिटी लेवल शुडंट हैपन, ना होती हो. So first I would like to point out the things that university, at least my university, does to help students. We do have these semester exchange programs that we send students to Stanford and Michigan University, and there are also fundings available for maybe top 2 students there. एक तो ये चीज है, सही है. And I think इसको देख के बहुत सारी encouragement मिलती है बाकी लोगों को that if they are not being able to go through university, they will start exploring the programs themselves, like different programs out which university is not sponsoring. One thing is that. Second thing is how faculty can help with the job applications and stuff. I think it's very important to have a balance between professors who belong to who have industrial experience as well as academic experiences as well. So they have connections and they can, you have more chances of getting the interview, at least if you are referred to that job.
So I think that is one thing that, like, instructors can do, refer to you to different companies or just bring the connection to your university. I think, and the third thing is that us students can do ourselves is being a part of a lot of online communities. Maybe Facebook, where there are tons of groups where tons of opportunities would be posted and nobody would be applying. So I think we should apply to that. There's LinkedIn. We do not make the right use of LinkedIn either. So these are the things that we can do to explore these opportunities. What was the second question? वो यही था कि जिस तरह हमने एक sort of चीजें लिस्ट करने की कोशिश की थी कि ये is a no list, कि ये चीज क्लासरूम में नहीं हो, अच्छी बात है. तो इसका यूनिवर्सिटी लेवल पे are there things that you wish to? So I would say, like, again, just as I mentioned, Habib does provide a lot of international exposure to students. One thing that I've personally felt is that they are very biased about the students they would be choosing. The students who would be on top of their different programs, they would be the only ones who would be getting selected. And matlab, like, uske baraks, I know people who are more deserving and who deserve to go there. Yani, are you saying कि जो GPA based decisions की बजाय कोई merit का criteria और भी हो सकता है, given the sort of opportunity? Yes. Like GPA, and I think GPA criteria doesn't really make sense to me because again, I think GPA, I do not agree. Matlab, हाँ, decent enough GPA, that is fine, but only so GPA true. is मतलब not. कोई entrepreneurship oriented कोई opportunity है, तो उसमें जरूरी तो नहीं ना कि जो GPA में अच्छा student है वही best fit इधर भी हो. Exactly. Absolutely agreed. Absolutely agreed. तो ये किसी चीज का क्राइटेरिया 3.9 GPA आप सेट कर दें तो अगेन यू आर 90% आपने स्टूडेंट्स को तो हटा ही दिया उस अपॉर्चुनिटी के लिए. True. ये हम लोग जितना ग्रेजुएशन से आगे जाते हैं तो उतना अंदाजा होता है रेट्रोस्पेक्टिव जीपीए की इंपॉर्टेंस जितनी बड़ी थी उससे कितनी कम है. और इट्स जस्ट वन स्मॉल पार्ट ऑफ वेरी लार्ज पजल. सर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? जिस तरह ऐमन बता रही थी, स्टूडेंट्स एक्सचेंज की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं और इंटर्नशिप वगैरह की है वो हमारे साथ भी कम्युनिकेट होती रहती हैं या कोई स्कॉलरशिप वगैरह आ रही हैं, उसमें अब बेहतर ये किया जा सके उसका, लेकिन कोई वो प्रोसेस नहीं है कि मतलब वो बता देते हैं कि भाई ये स्कॉलरशिप आई हुई है, फिर उसके बाद मतलब गाइडेंस मैकेनिज्म हो, मतलब अप्लाई आपने कैसे करना है, आपकी CV वगैरह वो आपकी देख लें, कुछ उसकी पॉलिश करने में आपकी थोड़ी हेल्प कर दें, तो और जो आपने वो पर्सनल स्टेटमेंट्स वगैरह लिखनी होती हैं वो मतलब सारा कुछ काम खुद ही करना होता है, वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं बस चीज़ों को. ये है अच्छा कि वो, और हमारे स्टूडेंट्स जा भी रहे होते हैं, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स पे भी जा रहे होते हैं और इस तरह की चीज़ें वो मतलब वो, लेकिन वो थोड़ा सा उसे और ऑर्गेनाइज कर दें तो उससे वो बेहतर हो सकता है. नहीं, शुरू में और जो बिग नो शुरू में किसी ने मेंटरशिप की भी बात की थी ना, तो आई गेस के कम्युनिकेशन रिले करने से बियॉन्ड यूनिवर्सिटीज को जाना पड़ेगा, मेंटरशिप देनी पड़ेगी. हमारी भी यूनिवर्सिटी वो मेंटोरशिप का एक वो अभी उन्होंने शुरू तो किया हुआ है, अभी हमने मिलने नहीं है अभी तक अपने मेंटोर से, लेकिन वो एक प्रोसेस अभी मतलब रिसेंटली ही शुरू हुआ है कि वो मेंटोर असाइन कर रहे हैं जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं उसमें. ट्रू. आप कुछ बाकी वो एक सवाल कर रहे थे. ट्रू. सर वो नो वाला था, बिग नोज वाला, तो उसमें अब एक वही चीज है कि आप फैकल्टी की क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज ना करें, बाकी आप जो मर्जी है आपने करना है कर दें, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ टीचिंग है और क्वालिटी ऑफ ऑब्वियसली फैकल्टी सेम ही चीज है, उसको आपने नहीं कॉम्प्रोमाइज करना. बाकी कुछ इस तरह भी अब हमने चीजें नोट की हैं, अच्छे रिसर्चर्स होते हैं लेकिन वो अच्छे टीचर्स नहीं होते और उन्हें अब स्टूडेंट यूनिवर्सिटीज की मजबूरी होती है, उन्होंने रखा हुआ होता है, इस पे भी थोड़ा सा वो मतलब गुजारा करें एडमिनिस्ट्रेशन वाले कि एक बंदे को नई टीचिंग आती तो उसे तो रखने की क्या जरूरत है. अगर आपकी जो बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, अगर इन अ वे व्हाट यू सेइंग इसके अच्छे टीचर्स अगर आए आपके पास तो उनको रिटेन करने की कोशिश करनी चाहिए यूनिवर्सिटी को. तो इसमें कोई आपकी ऑब्जर्वेशन है कि क्या यूनिवर्सिटी कर सकती है जो टीचर आपको पसंद, आपके खास यूनिवर्सिटी में रहें, आपके डिपार्टमेंट में रहें तो आपका एक्सपीरियंस बेहतर होगा, आपके और पुलिस का बेहतर होगा. वो अगर आपके सामने कोई छोड़ के गए
टीचर्स, तो आपको लगता है कि कोई चीज़ यूनिवर्सिटी कर सकती है अच्छे टीचर्स को रिटेन करने में? इसका तो मेरे ख्याल से जो अच्छे टीचर्स छोड़ के गए हैं वो बेहतर आंसर कर सकते हैं। अब सर नुमान से आप ये पूछ लें। नुमान स्पॉटलाइट आप पे आने वाली है, लेकिन मेरे ख्याल से आज नहीं आएगी, वो नेक्स्ट सेशन में करेंगे। एक अलग कंप्लीट सेशन चाहिए ना फिर। दो बगड़े तो यहीं बैठे हुए, तो मेरे ख्याल से बहुत जबरदस्त आप लोगों के साथ सेशन रहा है। मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स, सो मेनी थ्रेड जो आपकी बातों से निकलती है, लेकिन उनको ना फॉलो करके भी हम लोग ऑलमोस्ट 2 आवर्स पे पहुंच गए। एंड आई रियली अप्रिशिएट आप लोगों का टाइम आपने हमें दिया, एंड आप लोगों ने हमसे अपने फ्रैंक ऑनेस्ट रिफ्लेक्शंस एंड ओपिनियन शेयर किए। सो अभी लास्ट हमेशा हम अपने गेस्ट को ये ऑफर करते हैं कि इस जो भी हमारे यहाँ डिस्कशन हुई, इफ देयर इज एनी इंपॉर्टेंट अनसेड थॉट इन योर माइंड, क्या समथिंग यू विश यू वांटेड टू से, डजंट हैव टू बी अबाउट द लास्ट क्वेश्चन, शुरू से आखिर तक कोई चीज जो आप अनसेड रह गई हो आपके दिल में, तो अभी दिस इज द टाइम, समथिंग दैट यू विश यू कुड हैव हाइलाइटेड अर्लियर. I just wanted to say one thing. As much as we have talked about what teachers can do, what the administrators can do, I think it goes both ways. We as students have the same responsibility, and it's not always about the teacher's job to be nice, to be kind, to be understanding. It's also about students to be nice, kind, and understanding to teachers, because they're also humans. So I think that is a very important thing that cannot be neglected. Especially true in the COVID times. Definitely, yes. Very fair and kind of you to say that, but that's a fair point, certainly. आप लोग फारे मुसव्वर कोई any last unsaid thoughts? यस, मैं कंप्लीटली एग्री करूंगा एमन से कि मतलब अगर आपने अच्छे टीचर्स आप एक्सपेक्ट करते हैं, तो आप भी अच्छे स्टूडेंट्स बने और अपनी भी जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी करें. I also completely agree with Musawar and Aiman. And overall, I want to add that I think Pakistani universities are going in a right direction, because even this podcast is serving that purpose. We are recognizing some flaws that might arise in these universities, and we are discussing them. So I think I think Pakistani people are aware of the shortcomings, and we are definitely taking steps in the right direction. So I think it will serve us right to be motivated and try our best, as we are already doing. Wonderful. Thank you. You folks have been brilliant guests, and I couldn't imagine a better panel of guests for this podcast. आप लोगों का input insightful, incisive, honest, fair. All these words can be very fairly applied to your input today. So thank you very much. Really appreciate your input. I think अगर इस तरह के स्टूडेंट्स के ऊपर अब नेक्स्ट बैटन जो पास होना है, तो आई थिंक वी आर इन सेफ हैंड्स इंशाल्लाह. बिल्कुल, ये स्टूडेंट्स हमारे लीडर्स बन जाएं तो मैं आई बी द फर्स्ट वन टू कास्ट माय वोट. यार पता नहीं लीडर बने या ना बने, टीचर अगर ऐसे स्टूडेंट बन जाए ना फिर बड़ा जबरदस्त. जी, ओके, सो दैट कंक्लूड्स आवर podcast.